Show me loving. I need your loving. 'Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving. I need your loving. Me, myself, ain't enough. It's like being hooked up to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. You got me beside along my heart. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Hold me, lover. I need you, lover. 'Cause I'm falling in too quickly and I can't break free. Just hold me, lover. I need you, lover. Me and myself ain't enough. It's like being alone in a crashing car. I need you to know how bad it hurts. Hearing the sound of my broken heart. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Well, hello guys. What's up? मेरा आवाज आ रहा है? अभी ले ही रहेगा. ठीक है. एक्सपोज ना हो जाओ. मुझे एक सेकंड दो.
Guess we can rest a bit. हम्म। ओके, मेरा काम हो गया। हियर वी गो लाइव। वाह, सामने मार रहा हो तो साइड में मारो। हाँ, पहली चीज मोहरा। 80,000 मोहरा। शीश। अरे, भूल गया मेरा चैट खोलना। You should really bring the Knights of Favonius with you next time. ओके, हेलो भाई। हेलो हटोल, व्हाट्सएप, गुड मॉर्निंग। चलो, आज की क्या कमीशन सही बोलो। फटाक से पहले कमीशन करने का। मैं ऑनलाइन आता हूँ। चिंचिन इम्पैक्ट प्लीज सेंड करो रिक्वेस्ट। अभी के लिए रुको ब्रो, अभी मेरे को थोड़ा सा स्टोरी मोड खेलने दो, फिर लास्ट का 1 घंटा रहेगा ना, तब आ जाओ। अभी के लिए थोड़ा स्टोरी मोड और ये सब साइड बिजनेस करने दो। किधर है ये? इधर है। अरे भाई, अभी आके क्या ही करोगे? मेरे को मिशंस तो करने दो। वैसे भी मेरे कोई भी ऐसे ये वाले मिशंस नहीं बाकी, कॉप वाले मिशंस नहीं बाकी। बाद में जब 1-2 क्वेस्ट हो जाएगी तब आ जाओ, मैं बुला लूँगा। अरे भाई, अभी आके क्या ही करोगे? बाद में बोला ना, अभी थोड़ी देर में आ जाओ। मैं वो सब बोल रहा हूँ, नहीं बोल नहीं रहा हूँ। आ जाओ, थोड़ी देर में आ जाओ। अभी पहले ये मिशंस करके मेरे हैंगआउट वाले मिशंस करता हूँ। पर भी ये क्या है? क्या है क्या कुछ? मैं बुलाऊंगा, थोड़ी देर में बुलाऊंगा। अभी के लिए मेरे को थोड़े से मिशंस करने दो, लेवल भी अपग्रेड विग्रेड के लिए बुलाता हूँ। किधर है? इधर। सब कुछ करने का टेंशन नहीं लेने का, बुलाएगा तेरा अल्फा भाई। वो इधर है। मैं बुलाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। अभी के लिए मेरे को थोड़े से मिशंस करने दो, जो मेरे बाकी हैंगआउट्स और सब कुछ है। उसके बाद यू आर वेलकम। किधर था भाई? चू। अरे मेरे को बटरफ्लाई चाहिए थी।
विंडमिल ऑस्ट्रेलिया। किधर है भाई? तुमको मैंने ऐड किया है शायद। ये तुम ही हो ना? इसमें से कोई दो में से एक ऑलरेडी ऐड कर दिया। हाँ ये देखो 50 लेवल ऐड किया है भाई, टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ करता हूँ मैं। फिश इधर गए लोग। नहीं भाई। हम्म, उसमें से आईडी नहीं था, अतुल तो नाम था। ऐसे कैसे? मेरा भाई है वो। अरे तो मेरे को जिधर से भेजे वही मैं इस एक्सेप्ट करूँगा ना। मैं आयुष्मान वॉरियर हूँ। रिक्वेस्ट भेज के रखो ना ब्रो। अरे कौन से इससे मारूं? इट इज माय बारबरा। रुको मैं अपना आईडी देता हूँ। इसमें चैट में मत दो। मैं क्या कहाँ से कॉपी पेस्ट करूँ? मोबाइल पे नहीं हूँ, मोबाइल पे हूँ मैं। चैट नीचे आईडी है उसमें भेजो ना रिक्वेस्ट, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबे पानी मरो सालो। ओ भाई क्या क्या दे दिस? शीश। और कुछ पड़ेगा इधर? फाइन कौन? देखो मैसेज है किसी का शायद से। नहीं विहम था मेरा। वन 120। ये क्या है? फिश फिश फिश। क्या क्या है? मस्त लगा। 120। Wish me luck. मेरे भी कुछ है क्या? किधर है? तो आगे जा। किधर गई?
पंछी बन फिर मस्त गगन में, आज मैं आजाद दुनिया की चमन से। ये मौत के कुएं में दे रहा है मेरे को। ओ ओ हाँ, We'll need more where that came from. हम लोग इधर दे सामने। भैया हमकी आईडी क्या है? मेरी आईडी देखो ना, कॉर्नर राइट में लिखी है। एक ही आईडी है मेरी, एक लौती आईडी, प्यारी आईडी, अच्छी आईडी, सच्ची आईडी। Let's spark things up a little. पीरी पीरी पम पम पगा पगा पम पम। आईडी नंबर, अब ये क्या है नया? यू आई डी है ना, यू आई डी है, देखो ना कॉर्नर में नीचे। मेरा स्ट्रीम फुल स्क्रीन नहीं है क्या? है ना, फुल स्क्रीन है। क्या हाल भाई के? अरे एकदम मस्त है इसके भाई, डेविल भाई सॉरी, नहीं इसके भी है। हाँ बराबर। आईडी आप जहाँ पे नाम आता है वहाँ पे नंबर आता है, ये आईडी ना। तो ये इधर कॉर्नर में क्या मेरा आधार कार्ड नंबर लिखा है? ये देखो मेरा माउस देख रहा है कर्सर, ये जो क्यू मेरा एबिलिटी I still मेन, have a lot उसके to do with नीचे it. भी वही है, इधर भी वही है। कर में चल जाएगा क्या ये 4 GB रैम? Rest while I i13। अगर तुम नॉर्मल गेम्स खेल सकते हो उस पे तो हाँ चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल गेम्स, नॉर्मल गेम चल जाते हैं, बट डोंट नो हाँ ये जेंशिन इम्पैक्ट। जेंशिन इम्पैक्ट इज टू ओपी। Ad Astra. Thank you for completing today's. ओह When you're high up, everyone can hear your voice. टाइटल चेंज में भी। आप लैपटॉप पे खेलते हो क्या? कौन? मैं मेरा पीसी है ब्रो, मेरे नीचे स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं ना। You should really bring the Knights of Favonius with you next time. मे भी मेरे को भी इतना याद नहीं है। ओके also don't know about Ad PC Astra and stuff. ओह कुछ तो अच्छा दे देते, छोड़ो। Ad Astra. अच्छा मोबाइल अगर आपके पास रहेगा और ये गेम खेलने का ही रहेगा तो मोबाइल पे भी चल जाते हैं ये गेम, नो वरीज।
मेरा ऑडियो ऑन है ना? इसका कुछ यूज़ है क्या? 3 मिनट। मेरे को एक क्लेमोर और स्टाफ चाहिए। पम 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 पम। कुछ मिला क्या? वे हाँ बे, मेरा अभी लेवल अप हुआ ना। अभी नया मिशन आएगा। इधर क्या मिला? ये टट्टी 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 टट्टी। हम्म, खाने को चिकन तंदूरी थोड़ा बना के लेता हूँ। चिकन तंदूरी, आई एम कमिंग। अरे ब्रो रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में बुला होगा। अभी मेरे को क्वेस्ट तो कंप्लीट करने दो। मैं बुलाता हूँ, टेंशन ना लो। मैं हूँ इधर, मैं इधर ही बैठा हूँ। नहीं बुलाया तो अनसब्सक्राइब और निकल जाना मेरे को। हाँ मैंने देखा। मैं बुलाऊंगा, मैं सामने से रिक्वेस्ट भेजूंगा, टेंशन ना लो। अभी के लिए मेरे को खुद का थोड़ा सा ये क्यों कर रहा हूँ मैं? हाँ हाँ, ये करना। अभी के लिए मेरे को थोड़ा सा खुद के मिशंस कंप्लीट करने दो, क्योंकि मेरे को रैंक बढ़ानी है अभी भी। और अभी मैं जा रहा हूँ वो बढ़ाने। कौन सा नया आया मेरे को देखना चाहिए। ओके ओके, मे बी ये वाला नया है, क्योंकि ये कल हो गया आधा और ये बाकी है। ये वर्ल्ड क्वेस्ट तो अलग ही है भाई, ये देखने में ही मेरे को डर लगता है। आईडी देख ले ब्रो, देख ले। मैं सामने से भेजूंगा, टेंशन ना लो, मैं सामने से भेजूंगा। क्या कंप्लीट हो रहा है इतना मेरा बैटल पास? शीश। ओह, आधा हो गया। जीन आई एम कमिंग। किधर है वो? तो उधर है क्या? वो मेरे नीचे ही है लोल। ऐसे एंट्री मारने का गार्ड्स को भी नहीं समझेगा अपन आए हैं। भाई स्क्रीन क्लियर नहीं है। हाँ, स्क्रीन क्लियर नहीं है, ऐसा कैसे? एक सेकंड। गेम की, अभी गेम की तो वैसे ही आएगी ना। मेरे को स्क्रीन डिस्प्ले कैप्चर पे खेलना पड़ता है, क्योंकि ये गेम कैप्चर नहीं करता गेम। I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest अभी while है I ना, go back? वो बीच में हो क्या रहेगा थोड़ा सा आइडिया। आइए जी नाइमियर। Thank you for coming on such short notice, Honorary Knight. I know you must be busy. Well, to make a long story short, there's a particular matter at hand that the Knights ये requires ना your assistance with. Yes, it has been one thing after another recently. Neither myself nor any of the Mondstadt garrison are able to catch a moment of peace. I have recently received multiple reports from the Knights of someone within the Lawrence clan having close dealings with the Fatui. The Fatui?
Again? But who are the Lawrence clan? There was a dark period in Mondstadt's history when the aristocracy ruled over the city. The hard-won freedom that followed with the fall of Decarabian was lost once again as slavery spread throughout the land. The first Dandelion Knight, Vanessa, spearheaded the revolution that overthrew the old aristocratic system and established the Knights of Favonius, leading Mondstadt to become the city that you see today. The aristocrats that had oppressed the people of Mondstadt were none other than the Lawrence clan. Oh, Paimon gets it. So the clan's We suspect as much, though we have yet to... Unfortunately, the Knights of Favonius and the aristocracy have been at odds with one another for as long as I can remember. We've already considered every possible way of resolving our differences, but it seems the descendants of the aristocracy remain antagonistic towards the Knights. No matter what stance we take when dealing with them, the outcome is always the same. Our efforts only result in adding more fuel to the flames. We could come knocking on their door on the grounds of a search warrant, but if the investigation were to come up empty, I'm afraid tensions and distrust would only increase. All of our past efforts would have been wasted. You are in fact the best candidate to represent the Knights of Favonius. But you need not emphasize your role as the honorary knight. You're a traveler from a distant land, and you can approach the aristocrats in this way. Once you come to friendly terms with the Lawrence clan, you should be in a good position to learn more of their possible connections with the Fatui. Leave it to Master Jean to come up with such a thorough plan. Perhaps such plans have become second nature after all the diplomatic issues I've dealt with. The name of the Lawrence clan member in question is Schubert. Lately, he can often be found strolling near the northern city walls. It is said that he is difficult to get along with due to his temperamental disposition. अरे मेरे पे But छोड़ दो thanks रे again for चुप your बैठो help. तुम If you run into any snags along the way, I'll जोड़े do anything in my अपन power to support you. ओके क्या करना है लुक फॉर द फॉर्मर स्टोकेट इन द सिटी चल लेट्स सी फॉर इट fish fish twing doom twing wing fish 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 let's go क्या रे तू है क्या तू ही है Huh? Who are you? Hello, we're here to... Hello? What's wrong? Did you just say what's wrong? Huh. And I suppose you think that you can simply strut up here and greet me in such an ignoble and vulgar manner? Given that I don't recognize you, I can only assume that you are a traveler of some variety. I'll have you know that you are speaking with the Schubert Lawrence, a blood descendant of the magnanimous nobility. If you wish to address me, you'd best consider your words more carefully. Now, if you're somehow capable of understanding anything I've said, then you will get down on your knees, apologize. That's etiquette? Paimon's never heard of something so complicated before. In former times, when people knew their place and respected traditions, such conduct was only basic courtesy when greeting a nobleman. And neglecting your manners would result in a swift whipping. ए चुप Ugh. टपली मारूंगा पीछे से और भग Look जाऊंगा at the world now. What did you say? You dare question the dignity of the nobility? ये कान के नीचे I'll बजा have रहे you know that though the Lawrence clan is in decline, myself and others of noble blood are looking for a chance to restore our rightful honor. Just look around. The people are unruly and undisciplined. Save your words. I find your manners and bearing repulsive. I have nothing to discuss with the likes अरे of ये you. भाई को कोई झाड़ू दे दो Besides, I am in no way obligated to instruct commoners on basic कितना courtesy. बोल दिया भाई Now I have more इज्जत ही नहीं pressing matters to attend to. इज्जत ही नहीं This is साले का what Master Jean meant by difficult to get along with.
Let's sit back and talk things over with her. Itto main. Can't catch me. हाँ ये अरे If it isn't the honorary knight. हवा I'm हवाई just on my way out to gather some intel. I didn't expect to run into you here. Huh? Judging by your expression, you must have run into some trouble. Master Jean tasked us with a special assignment, but things seem to have run aground for the moment. No need to get down on yourself. Sometimes things just don't turn out as planned. Even I can't guarantee useful intel every time I'm You just have to keep at it and never give up. Hey, why don't you let me try to help? What's the problem? Master Jean asked us to build a connection with someone named Schubert Lawrence. But it turns out that he's a peculiar character that doesn't listen to anyone. Especially Paimon. Aha, Schubert! I know him. Let me guess. He said you didn't have any manners. I've been on the receiving end of his lectures many a time. The Lawrence... इस साइड से कोई सुन रहा है Everyone in the Lawrence clan is just a big headache? As aristocrats, they believe there should be a certain distance between themselves and common folk. I understand their thinking, but that's just not how things are anymore. However, there is one exception among the Lawrence clan, my good buddy, Eula. Buddy? That's right. Not only is she from the Lawrence clan, but she's also captain of the Knights of Favonia's 4th company. Eula is special. She's not quite like the other members of her clan. She has her own beliefs and it shows. In other words, she doesn't really adhere to the strict rules and conventions of her family. However, she's still quite knowledgeable about dealing with the Lawrences. I'm sure you'll see what I mean if you meet her. That's strange. If Eula is a member of the Lawrence clan, then why would Master Jean choose us for the task? Couldn't she just ask Eula? Well, it's a little complicated. Basically, the Lawrence clan has frowned upon the fact that Eula joined the Knights. Her family members don't particularly care for her. In their eyes, Eula is nothing but a traitor to the family. ये भी सही है मतलब घुमा फिरा के सब मेरे को ही She's करना very easy to get along with. Just explain the situation, and I'm sure she'll help you come up with a way to get along with Schubert. In fact, I think she's out in the wilderness on patrol this morning. You should be able to find her around Storm Bear Mountains. Thanks, Amber. All right, you heard her. Let's go find Eula. Good luck, you two. I have my own matters to investigate. Who would have guessed the Knights have a member of the Lawrence clan? Well, if you want to learn about the conduct of the Lawrence clan, who better to ask than one of their own family members? Oh, that doesn't sound very good. इसको क्या है धोरे बिवरे आते क्या अरे बार अलग अलग चीजें उला आई एम कमिंग भाई इनको नहीं चाहिए भाई ओह The Fatui? What are they doing here? Is that why Eula was sent on patrol here? Let's fight first and talk later. AlphaBoii! 44 level seriously reinforcement एक किला ही हाँ ये कौन है बे ए मेरे सिर पे टपली
अरे फटे ही होगा घर पे ही। You don't think कौन twice था before रिक्वेस्ट reaching वाला? for your sword, do you? And now you get to stake a claim. What? That's right. I heard the commotion and came as swiftly as I could, only to find you two already fighting the Fatui. Not only that, you are making quick work of them too. If I didn't make my move, you would have been able to take all the credit. Still, I'm glad you're unscathed. Confronting that number of... Sorry, Paimon doesn't understand what you mean, but thanks for your concern. Concern? Why would I be concerned for the safety of my arch enemies? Arch enemies? Wait a minute. You were saying how glad you were that we were unscathed a second ago. By which I meant, if you were injured, I'd have to escort two strangers guilty of stealing my targets all the way back to Mondstadt. Which would mean you'd cause me even more trouble. My vengeance would be swifter still. Huh? So that's how you see all this? Yes, that's me. Paimon thinks she's pretty strange. Although at least we can communicate with her. You dare to call someone you've just met strange? Forget the aristocracy. That's rude even by normal standards. Speaking of which, how do This is the honorary knight of the Knights of Favonius. And speaking of rude, we're trying to investigate an He's so obsessed with etiquette that he's not even... I understand now, but why do you mean to investigate him? I see. You have some nerve to faming a family member right in front of me. No. This is an assignment from Master Jean. It's just an investigation. To the everyday citizens of Mondstadt, everyone in the Lawrence clan is scum. It's natural for rumors and unwarranted gossip to मैं lead to रिक्वेस्ट such भेजा suspicion. हूँ। हाँ मैं Hard एक्सेप्ट to कर gain लूँगा। such a reputation when you're known as the ruthless... Oh, so that's what you think of me? Curious. We've only just met, and you've already given me 3. I assume you need me to teach you the conduct of the Lawrence clan. That's right. Amber told us to come in... Well then, let's begin your training immediately. We can put that aside for now. Besides, if it's the acting Grandmaster's assignment, and Amber's the one who recommended me, I should... Paimon's ये देखो confused. मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके रख रहा हूँ। ये देखो इधर एक्सेप्ट करके रख रहा हूँ। मैं जब बुलाऊंगा तब आ जाना। इजी ठीक है भैया, जब बुलाऊँ तब आ जाना। मैक्सिमम लेवल 5 कैसे? अच्छा हाँ मैंने मेरा कम किया ना बराबर। हाँ ये अभी मेरे को याद है। छोड़ो Still, Paimon has met bigger weirdos before. मेरे को खेलने दो थोड़ा। इधर ऊपर क्या है? ऊपर है क्या ये? शीश प्रिंग तुमने क्या अपना आईडी छोटा नहीं किया है? वर्ल्ड रैंक 45 पे भी इतना ऊपर लगा। किधर है ये? ओह उधर है। प्लीज प्लीज ऊपर चल। प्लीज 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 पोइंग नाउ। किधर जाना था? भाई मैं बोला मैं सामने से भेजूंगा। मैं सामने से भेजूंगा। रुको मेरे को थोड़ा सा वर्ल्ड क्वेस्ट करने तो मेरे को भी मेरी रैंक बढ़ानी है। तुमको लेकर क्या ही करूँगा इधर। एक तो वर्ल्ड वर्ल्ड को Ah, you finally arrived. There's no time to spare, so we'll begin with our first lesson. Wait, hold
we need to clear up first. Otherwise, it'll keep bugging us. So that's still on your mind, huh? Maybe you're the ones who can't let things go. Don't worry. There's a time and place for exacting vengeance. Besides, I'm not in the mood for any right now. Best save it for later. You need to be in the right mood for vengeance. I already have a long list of vengeance to exact. Even if I wanted to begin now, I'd have to start in the right order. Who knows how long it will be before I get to you? Well, अरे पापा रुको, हेलो। मैं बोला सामने से बोला होगा मैं। मैं अनफ्रेंड कर दूंगा ब्रो। मेरे को कंप्लीट करने तो बीच-बीच में रिक्वेस्ट मत भेजते बेटो। But you needn't worry, at least not whilst we're investigating this matter. I'm sure you're familiar with the phrase, a man of moral integrity fears no slanderous attack. If Uncle Schubert didn't commit any wrongdoing, then any such investigation will prove fruitless. But if he did commit a wrongful act, then he should bear the full punishment. I'm sure you understand. Good. Now, there are two key points that aristocrats attach great importance to. Your manner of speech and your bearing. Let's begin with your manner of speech. Aristocrats have a very unique way of carrying conversation, even with mundane daily topics. Oh, Paimon's already learned some unique conversation. Mark my words, vengeance will be mine! Not even close. And besides, it sounds strange. Hey! Paimon learned it from you! It seems you don't respect the rules of your... No, I've no need to trouble myself with such frivolous... For example, when greeting a friend, you could say, "As the morning dew greets the coming dawn, so do I greet you, my dear friend." As the morning dew does what now? However, such a phrase may only be... Morning dew is not uncommon, so it expresses that friendship should not be measured by value, yet also suggests that friendship between aristocrats is pure like water. Oh, no. You must be prudent with your words. Calling someone a good friend could easily offend them. But didn't you just say "my dear friend" in your example? Paimon's confused. Yes, I did. But you must know, in the Lawrence family, dear friend is a set phrase that can only be used towards certain friends with whom one is acquainted. It sounds much more pleasant to call an acquaintance a dear friend. So, another thing to remember. However, if you were to use dear friend to address an intimate friend, the recipient would think this is only the first step in making a greeting. After addressing one another, you then exchange courtesies. Wait! This is all too abstract. Perhaps it would be better if you gave some real-life demonstrations. Ah. Very well. Come with me. We'll choose some bystanders to converse with. Hey, Norman Osmond. You're Eula of the Lawrence clan, right? This can't be good. You there, lowly laborer. You stand in the presence of a member of the illustrious Lawrence clan. I have words for you. Please acknowledge the glory bestowed upon thee by the nobility... What comes next? Oh, right. By solemnly kneeling to the ground with utmost sincerity. Huh? I can't make heads or tails of anything you're saying. Hold on. What did they always teach me? Whenever a dispute arises, protection of your family's prestige and dignity always takes precedence. Got it. As a lowly commoner, you shall maintain absolute reverence when speaking with those under which you so graciously toil. How dare you speak in such a manner? Is everyone from the Lawrence clan so strange? The days of the Lawrence clan's tyranny have long passed. I don't care what you're trying to do. Just beat it. Like I said, I don't care what you're doing. I have nothing to say to any member of the Lawrence clan.
And here's a word of advice. I wouldn't be caught dead walking too closely with any one of their like in Mondstadt. If that's all, I'll be going. I'm afraid I won't be able to control myself if we talk any longer. Hey! Don't leave! Halt! Mark my words, vengeance will be mine! इज्जत उड़ा दिस. The Lawrence name really does carry a terrible reputation. Never mind him. I could have predicted as much. Let's find someone else. Okay, now continue. Leno, sorry. Youth, please acknowledge the glory bestowed upon thee by the nobility, and solemn... Huh? Why don't you respond? According to the custom, I must wait until you kneel completely before I can say the next word. Right. I mustn't look at you too long, or I'll be drawing more attention to our differences. Fine. You may spare yourself the formality of kneeling, as it may be a little inconvenient. I shall continue. Oh, wait. I think there's a line for people with rude attitudes in this situation. Hey, stop bothering me or else I might say something you wouldn't like to hear. And again, I've got no words for anyone from the Lawrence clan. Again? What's with this attitude? Yes, I don't think his attitude will change. If I keep grandstanding like this, the outcome won't be good. Let's try to find someone else to talk to. I'll remember your unwillingness to comply. Mark my words. Vengeance... इज्जत ही नहीं दे रहा है कोई इसको. You there, lowly worker. Yeah, I've already heard it all before. Look, just spare me the time. Our answer's always the same. We've got nothing to say to the likes of you. I mean, seriously, can't you just take a hint? Please calm down. We don't want to cause any trouble. I know she's a Knight of Favonius, and that the Knights wouldn't misplace their trust, but the name Lawrence carries too much weight with it. Even to this very day, the descendants of the Lawrence clan are still scheming to reclaim Mondstadt and reinstate their aristocratic. And if that wasn't enough, here you are purposefully using their awkward way of speaking just to put on an act? Don't you care for the feelings of us ordinary folk? You have a point, but mark my words. This transgression will not go unnoticed. Huh? You want to fight? Listen here. I may be no match for you, but I'll be sure to lodge a complaint with the Knights of Favonius. I'm sorry, but I want her to understand that I'm serious. Listen here. If you don't want things to get more... Forget it. There's no point in quarreling any further. क्या चल रहा है ये? This happens quite often. मिशन समझ भी नहीं रहा मेरे को. आधा ही मिशन समझा. Paimon thinks we've seen enough now. Let's just stop. Actually, Paimon thinks we should apologize for asking you to demonstrate for us. We had no idea the feelings between the Lawrence clan and the people of Mondstadt were so bitter. What can we do? The Lawrence name is all... Don't worry. What with me being a Knight of Favonius, perhaps my aristocratic manner of speech provoked them today. Believe me, it's not a big issue. So this is the way things are normally for you? That's the way things are. Perhaps it's just fate for those who have made mistakes. Accepting punishment is only fair, right? As memories are carried in the city breeze, the faults of such grievances are passed from one generation to the next. At least I have a means of living a relatively normal life compared to the elders of my family. Yeah! Why were you so willing to try— Oh, that reminds me. That last person will not escape my vengeance either. Let's leave it at that. But unfortunately, you probably didn't learn much from those conversations. It seems we have no other choice but to find more people to talk to. No need! Besides, the Traveler's pretty sharp, and nothing gets in our way on an adventure. Paimon thinks we got— right? Right? We'll just have to roll with it for now. Let's just keep Eula from getting anyone else riled up. Well then, I'm glad you learned something. You're already halfway toward mastering aristocratic conduct.
A proper manner of speech is more aesthetic than anything else. It stems from their taste for refinement. But we must also practice your bearing. I have a very effective way of training for this. Come with me to Dragonspine. भाई बालोबा, ये बार बार बीच बीच में रिक्वेस्ट मैसेज ऐसे मत करते बैठो। मैं सामने से बुलाओ को बोला ना। ड्रैगन स्पाइन इधर है। Alright, it's time for a snowball fight. You're never gonna win, though. साइड में डिस्प्ले होते बैठ जाएगा फिर नहीं तो। It's so cold. Does aristocrat training really need to be done here? If you wish to truly achieve the dignified conduct of an aristocrat, you must learn to remain composed and elegant even amidst harsh conditions. For example, you can see that part of the path up ahead is quite difficult to traverse. But a well-trained aristocrat would not only effortlessly proceed forward, but do so without a stain on their garment and their elegance fully intact. Paimon thinks we've left the realm of aristocrats and entered the realm of adventuring. Compared to what we've already seen, this should be a piece of cake. This is where you can finally apply some of your adventuring knowledge. अरे ब्रो मैं अनफ्रेंड कर दूंगा, मैं बोल रहा हूँ। ये बीच बीच में मेरे को रिक्वेस्ट मत भेजो। All right, let's get started. तो मैं बाद में फिर You must... वापिस भेजा ना, मैं अनफ्रेंड कर दूंगा, बोल रहा हूँ। That won't do. You've exposed your shortcomings. No need to worry. It'll be difficult at first. Remember, you must... Attaboy! Can't catch me. हो भी गया। Not bad. A lot... Don't flatter. This scenario was relatively simple. In the face of a real battle, one would seldom... There's a ley line monolith just up ahead that will... True elegance is the ability to calmly yet swiftly make decisions in the heat of battle. My family set only the highest expectation. Let's proceed, shall... Can't catch me. This is the ley line monolith. Go ahead, activate it. But be careful not to get launched into the air or frozen while fighting. That would be most unsightly. Attaboy! Oh, coming through! Can't catch me. Let's roll! Well done. Your performance, and you managed to remain calm given such an outstanding performance. It seems Like Paimon said, adventuring is ours. So, that's it for our training, right? Hold on. I was commending the traveler's performance just now.
You, on the other hand, seem to have made no progress at all. What? You mean Paimon was also part of the Yes, of course. You were frantically flying and dashing about throughout the entire thing. Did you even listen to anything I was trying to teach you? Yeah, that's it. It's too cold here. Besides, Paimon was paying attention to the traveler. Whatever the reason, not heeding my instructions. A cause for vengeance, perhaps. Now. Huh? What is it? Are you trying to poison Paimon? Certainly not. Didn't you just say that you were freezing? Drink it and it'll help. Oh, thank you. Are you still planning on the whole vengeance thing? If I wasn't, then why would I care about you being cold? If you turned it so, dear friend, don't die on me out here. Ah! Paimon knew something was off. All in the name of vengeance. No need to thank me. Now then, given that your training is complete, it's time we return to Mondstadt. I already have something in mind. Let's pay Sarah a visit at Good Hunter. Good day. No. खाना खाने का ओ एम्ब्रू Oh, hey, Eula. I see you've met the honorary knight. We meet again, Amber. Seems we're just bound to run into you these days. Well, I just got back and was thinking about grabbing a bite at Good Hunter. But now that you're here, why don't we all eat together? Very well. It's been some time since we've last shared a meal together. Come, take a seat. Yes? Is there something else you'd like to order? Could you please prepare a serving of my uncle's favorite, Gebrotenes Fleisch mit Sauerkraut? We'll take it as a gift to him. Coming right up. It'll take some time to prepare. I'll have it here at the counter once it's ready. Hold on a moment. Is this satisfying salad also something that Amber ordered? No, she didn't order it. But because she didn't order any vegetables, I thought I'd throw in a salad on the house. You know, to contrast all the meat dishes. So, we clearly didn't order this, yet you prepared it without authorization. Mark my words, this transgression will not go unnoticed. You're gonna take revenge on her for giving us a free salad? You should know me by now. That's the kind of villainous character I am. Well then, please wait a moment while I get the dish for your uncle started. Delicious unauthorized delicacies. Sarah will pay for this. Why would you choose Gebrotenes Fleisch mit Sauerkraut as a gift for your uncle? क्या हाल Paimon's अरे not even heard. This dish isn't actually on Good Hunter's menu. Because of the sour flavor of the sauerkraut, not too many... Eula treated me to the dish once. भाई and I आज couldn't तो really finish लेक्चर the ले plate. रहा I've हूँ nicknamed it लमो Gebrotenes Fleisch mit Vengeance ever since. Ugh. I never expected us to Teacher have हो such क्या completely different... Of course not. बट It's लेक्चर hard to के find बीच someone in में भी Mondstadt that स्ट्रीम attracts देख contempt रहा as much as अरे she does. कोई ना देखो It's fine. प्रॉब्लम नहीं Eula's always talking about vengeance, but But I तुम am टीचर हो serious, क्या and I'll remember every transgression committed against me. Paimon's starting to realize that Eula's actually a... There's no need to be so awkward when you want to say something nice. Listen, you've never been labeled as a social pariah, have you? Well... So that's why you wouldn't understand how hard it is for a bad person to try to be good. All right, no need to look so sullen. I'm just kidding. Come on, let's eat. The food is getting cold. oh, I'm stuffed. I'll see Sarah about the bill. No need. I've left the mora under the plate. If you try to settle it with her in person, she won't accept payment for the salad. Don't underestimate my ability to exact revenge. Sarah won't get ना the ना upper hand this स्टूडेंट्स time. आज का दिन भी All right, क्लास ले next you should pay my uncle रहे a visit. अच्छा ओके ओके He has a small camp at the top of the... aren't you coming with us? आज छुट्टी कैसे नहीं दी I'm afraid that wouldn't be very convenient for me. It'd be better मेरी if तो you two एग्जाम्स went चालू alone. इसलिए मैं स्ट्रीम कर रहा Ah, हूँ yes. Please do I saw कल how मेरा much you शायद wanted से to लेट Willard. होगा स्ट्रीम चालू Well, कि until कल next सुबह time. एग्जाम है Let's meet again. What an...
5 पेपर के लिए 22 दिन। अभी क्या करना था? सारा Here, the Gebratinous Fleisch mit sauerkraut is ready to go. And by the way, don't worry too much when Eula says strange things. She's actually a very good person. अरे एक्स्ट्रा क्लास से No one could stand the Yeah. sight of Lulu, but she seemed to get along fine with you and Amber just now. What's The people of Mondstadt don't take kindly to. They are unable to see past her family. Therefore, so no matter what Eula tries to do, it's seen as a wrong. How come you're able to see Eula differently then? Well, when she joined the Knights of कौन Many से Knights क्लास में signed हो a अभी? petition demanding that the Knights reverse their 10th हो गई? decision. At the same time, numerous members of the Lawrence clan crowded the entrance of the Knights of Bavonia's headquarters, clamoring for Eula to give an explanation. Whoa, so both sides were unhappy. That's right. So you can imagine how determined Eula must have been under such circumstances. But thanks to Grandmaster Varka and the unwavering attitudes of others in the Knights of Favonius, they were able to quell the unrest. Tensions still remain beneath the surface, I'm afraid. In the eyes of the people, she's a stain on the Knights of Favonius. And in the eyes of the Lawrence clan, she's a disgrace to her family. But she simply fulfills her duty as a knight, silently helping one person after another, myself included. 17th and People 18th like के बीच Eula में should be approached with care and understand. I believe a day will come when things will get better. Once everything's Good. settled, we should go talk to Eula again. Paimon thinks we know how to communicate with her now. I'm glad. I think that would make her very happy, though she might not ever admit it. Take care. Please come again. 17th 18th मतलब तुम मोस्टली 11th या 12th में होगी या 18 साल। मेरा तो अभी नेक्स्ट मंथ में 19 हो जाएगा, मतलब मैं अभी 13th में होना चाहिए था। 3 ईयर डिप्लोमा बराबर। तुम 11th या 12th में होगे। मैं ईटो को अपडेट करूँ क्या? डेवलप स्टार्ट कितना होगा? थोड़ा सा ही बाकी, थोड़ा सा। Itto, you're just barely. इसके बाद कितने चाहिए? हेराम 70 होके छोड़ देगी। टीपी है क्या उधर? छोड़ो, भागते भागते यू गेस इज राइट। अरे भाई पता है, मैं खुद 18 साल का हूँ अभी के लिए। इम्पोर्टेंट। ठीक है बाय बाय। पढ़ाई करो पढ़ाई करो। इनबिल्ट रिक्वेस्ट ये नहीं कर सकता क्या? हाँ, अभी के लिए ऐसा रख देने का, फिर बाद में, समझ रहे हो? चौड़ अभी ये वापिस। The tent seems to be pretty tattered, but there's a really fancy chair. Could this be another aristocratic custom? Ah, it's you again. I thought I had rid myself of you. Magnanimous. Yes, indeed, that is true. Very well. I'm certainly not one to be narrow-minded. I'll overlook your previous लिखने misconduct का for now बिल्कुल and मन listen नहीं to my- करता। Ah, a kindred spirit, थोड़े दिन I में see. चैट में आने वाला है Yes, we सॉन्ग। must impressive. तुम लोग भी My माइक से बोल intentions पाओगे were to चैट में। test your- Oh, so he was टाइम है पर उसके Your लिए। conduct is satisfactory. I must say, if I may ask, from whence did you learn such a civilized manner of speech? हेलो हेलो Good. मेल्टिया। Very good. You are bright, and compared with the common folk of Mondstadt, you certainly have potential. If you were of aristocratic blood, your prospects would be promising indeed. By the way, we brought a gift. Paimon me.
this be? Gebratnes Fleisch mit sauerkraut? It's evident that your sentiment is genuine. As a young person nowadays, only with no small effort could you achieve such a dish. It's been so long since I dug into a big, tasty... I beg your pardon. What I mean to say is, since it's nearly mealtime, I shall partake. ये भुक्कड़. Ah, yes. This aroma, just as I remember it. And this exquisite sour flavor. A delicacy that only us noblemen and women could appreciate. Now even Paimon's starting to wonder what it tastes like. I acknowledge your genuine goodwill. Such sincerity must certainly imply that you come bearing a request. Wait, so you've come to know of this too? It was meant to be a family secret. Well, considering your meticulous etiquette, you must be a talent of unusual fortitude. I'm willing to place my full trust in you. Please, come with me. We happen to be in need of competent fellows like yourself. To see some friends from a distant land. They have offered their assistance in restoring the Lawrence clan to its former glory. So he trusts us solely based... Well then, let's get going, shall we? Do you think his friends are the Fatui? Things will get sticky if the Fatui happen to recognize you. What should we do? Observe the chair. एक सेकंड ना. ओके. हाँ, इधर से कुछ उठाना था मेरे को. चाहिए इधर पड़ा. बुक में कुछ पड़े. टीपी मानेगा. टीपी टीपियाँ 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 टीपियाँ. मिल्टन उद्या पेपर है क्या? ओपा. आइस का नहीं लिया तभी चल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे को यूला मिलने वाली है. एज यू नो यूला है. प्लीज यूला. Huh? Why have you put on a mask all of a sudden? Even if they are powerful, and therefore we shouldn't allow them to admire our... For the exam, na? Let's proceed, shall we? Please give me Yula. Yula नहीं दी. As you'll see in a moment, there are many already helping us. नहीं, मेरे को Yula चाहिए. Yula चाहिए. Hey bro, what's your name? Lol, the Chinese name. Chinese or Japanese, whatever you call it. I didn't understand that. Sooner we're done, the better. Huh? Why have you put on... Even if they are powerful, and therefore we shouldn't allow them to admire our true faces so easily. I see. Good thinking. Paimon thought for sure they'd recognize us. Let's proceed, shall we? I'll introduce you as my guest.
Okay. As you'll see in a moment, there are many already helping us. I heard that this area had already been purged once by the Knights of Favonius, but it's the only place around Mondstadt that is well concealed and spacious enough. Although it has fallen into disrepair and does not suit the tastes of the nobility, we simply have to make do for now. Sorry, can we walk any faster? Of course not. An aristocrat always moves with grace in his steps. Moving hurriedly is unacceptable. पीछे ही मारू है तेरे. Expected. It's the Fatui. अरे बोलिए. As expected. Because we always see them around the city. They must be very powerful. Huh. Nothing more than foreign ruffians with power and the ability to flaunt it. But they ना are जल्दी जल्दी चल favorable रही to है. this part. Hold it right there. Who's this? If you really must know, they're my guests. If you happen to offend them in even the slightest, then you will be held accountable by the law. But this matter is of utmost secrecy. We must... You dare question the ways of a nobleman? I don't have time for this. No need to sound all high and mighty like that. Fine. You may proceed. Come here with us. They don't dare to question you. Of course. That is the benefit of prestige. In past times, it would be a dire offense to speak to a nobleman in such a manner. We could determine a person's fate with the blink of an eye. Huh. And such glory will return to me again before long. Where have I seen this person before? And who, may I ask, is this? This is our new ally that I've recently met. They are... Our plans are strictly confidential. Furthermore, there's been word that an outlander who joined the Knights of Favonius has been very active in Mondstadt recently. Don't be ridiculous. Besides, my guest is well versed in the etiquette of the nobility. I must treat them with the proper mutual respect. The Knights of Favonius pay no regard to such details. They could never understand the intricacies of our etiquette. And what about this thing? You mean Paimon? Enough! You dare question my word? Need I remind you who it is who has made your activity in Mondstadt possible? Without the support of the Lawrence clan, you would have all been driven out by the Knights of Favonius like dogs. You must immediately offer your sincerest apologies to my friend. You've offended their honor. Fine. I'll take your word and make no further inquiries. Now, to the matter at hand. Did you bring the diagram of Mondstadt's defenses as promised? Oh, so that's what's going on here. Yes, of course. Here it is. Let me see. Why is it so poorly drawn? Everything's so squiggly and crooked. And what is this shape supposed to be? Excuse me? I'll have you know that I went to great lengths to carefully draw this map by hand myself. That shape is the symbol of the Knights of Favonius. I see. Crude, but I can make do. Are you able to verify that this is all reliable information? Of course, you needn't worry about that. Don't forget what we agreed upon. The flag of the Lawrence clan will fly above the Knights of Favonius headquarters. इसका तो टपली पे जाने वाला Yes, लास्ट we में. will both profit from this agreement. We will make good use of the intel you provided. Also, be certain not to divulge our identity. Don't worry, this matter is only between you and I. And my new friend here. No one else will know of. Once this is over, I shall stand atop the Favonius headquarters and rebuke their Perfect.
just as it once was, and just as it should be. May I remind you once again that we mustn't act rashly. That is all. For... Very well. Huh? What are you doing? That's right! It's the honorary knight and their trusty companion Pat. So this was all just a ploy to deceive me! It's your own fault! Who would put so much trust in someone based purely on their manners? After so much planning, this is how it ends? Huh? We'll see about that! Just as I expected. I knew I should have never trusted these foolish aristocrats. No matter, we already have the intel we need. They're running off in different directions. Paimon remembers that this place is a dead end. Let's take care of the Fatui first and then deal with Schubert later. AlphaBoii! Killjoy! We've only just begun. Let the show begin. This quickly! You can't run! कितने दिनों बाद रोज़ारी यूज़ की? I miscalculated. Who wants some of this? There! इसको डैमेज चीज से पड़ेगा. Oh, I have one agent. Ish, 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 ish. I'll protect us. It's too bad. Door is open. Let's go. अरे ये तो सही था क्या? Don't touch me! Get out of my way! It seems we finally caught up with you. This place is crawling. Oh, it's you. It seems your investigation went well. Aha! I see now. So you're the one that taught them our etiquette. And I thought you despised such pleasantries. Furthermore, there is a rule in our family. Ah, yes. Rings a bell. So what? You have brought shame to our family and ruined my plans. It's all... I know that you poured great efforts into these plans, Uncle. But you were well aware that it was not the right thing to do. Bro, Republic Day title change करो. No, it's Independence Day. Knight of Favonius? मैं मुद्दा Let's उठा लिया. get one thing straight. I am your uncle, and you are a member of the Lawrence clan. You should strive to restore your family's glory. You still have a chance. Defeat every मैं knight of मुद्दा उठा Favonius लिया here, Independence and Day. leave टेंशन with नको me. लो. Then I shall plead with the So just to be clear, I shall say this. The blood of the Lawrence... since when have I... Why, you... If anyone should be angry, had you ever stopped to consider the trouble it would bring to so many people? Had you considered how many enemies you would make, trying to... You... That's right. I've never experienced... But I am capable of... The Lawrence clan should... Oh, the disgrace of it all! How could such a rebellious monster emerge from our own family? एक सेकंड थांब. मला गाणं लावू दे कुठलं तरी. कंटाळलो मी ते ऐकून ऐकून. Win. Where is my Spotify? NCS को लाते. No NCS. एक सेकंड आमा विंडोज कैप्चर कुठे ये
अरे एवढंच कॅप्चर होतं काय? जॉड ओके कुठे गेली विंडोज? आई विंडो गायब झाली. नाही करायची गरज नाही. त्याचं पण ते स्क्रीन चेंज करायला मला ते अल्टॅबच करायला लागलं. That's enough fuss for today. Given that you've ऑन already कर taken स्पॉटिफायला action, I assume you've कॅप्चर come across some करतोस conclusive काही. evidence? स्टॉन अँड मिनिमाइज. अरे सर थँक्यू सर, मला माहित नव्हतं. थँक्यू थँक्यू फॉर टेलिंग. And there was me thinking that he was just another elder of the family. Let's discuss this later. Our first अरे आता युला दिली यांनी. शीश युलाची पण हेच आहे. more speed. जॉड They're here. Stop them. Let's roll. ओनली वी आर ऑन स्ट्रीम. हे काय होतं? इंग्लिश NHK. Let the show begin. Counterattack. Shut up. Finally. So quiet. युला डंजन. Have a load of this. It's showtime. Let's roll. This is trouble. Over. Looks like I went too far. You need to hurry up. अबे तुझी इंग्लिश NHK. मी बोललो मीच आणि रे बघतो आहे स्ट्रीम. कोणी सांगितलं? हा बघ हॅपी रिपब्लिक डे तुषाराला. काय बे शीश तुषार. हाँ Can't catch me. पता है मालूम है. Let's roll. I will end you. वो थोड़ी देर के लिए रखा था मैंने, कोई नोटिस करता है कि नहीं देखने के लिए. वो चेंज भी हो गया, देखेगा तो चेंज भी हो गया. देख Let's end this quickly. Touche. Freeze to the core. Beg for mercy. Attaboy. Okay, that one hurt. I'm
Can't catch me. Oh, coming through. तो शायद एग्जाम के बाद का प्लान है ना? टायटल अब मी चेंज बोल के मी चेंज कधी केला? मी चेंज कसा करू? मी गेम खेळतोय. ऑटोमॅटिक आहे सब कुछ. I got some mods that can handle my channels too. Not you. ये मरेगा नहीं शायद. अच्छी इश. ओ मैंने अभी ये वाला पढ़ा. नो इट्स इंडिपेंडेंट डे फॉर अल्फा. लॉल चट्टा करता हूँ बाजी. Who wants some of this? Shut up. Let's roll. My duty at an end. Ready, steady, go! Let's dance. मिल्टन आज का पीसी बन. Beg for mercy. ही तो चीटिंग होती. More speed. यानी काय लिहिलेलं आहे? एक सेकंड हा. पीसी वरून तर बघतोय. ओ भाई पीसी गेमर और व्हाट? म्हणजे आज नो गेमिंग. आज अभ्यास. ओनली अभ्यास. अभ्यास 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 अभ्यास. That's where they put the diagram. This here, huh? ऐ I guess there's no other option. तोर साल्या. ये मर. I'll protect us. You dare provoke me! Fatui, come forth and dispose of them! तुला आधी मारेल मी. Flood of frost. No escape! That seemed to work. You can't Beg for mercy. I must collect you. This is trouble. This must be it. They may very well have already made a copy of it. But without my uncle as their puppet, there'd be no use in them attacking the city. The Fatui wouldn't have relied only on your uncle. True. But if the Fatui are dishonest, but they wouldn't anyway, I'll inform the acting Grandmaster. Oh yeah, you said. Yeah, about that. Because you stole my targets by attacking the Fatui I'd been tracking earlier. I came to exact my vengeance. You tried to do my job for me, and I'm here to return the favor. Finally, after
this time, Paimon understands what you're saying. In reality, you sensed that something might... You were worried about it. My purpose was vengeance. You don't look too bright, and mark my words, I'll remember. Hey! You have seeded a deep enmity. Even if you were to be completely destroyed, I would never forget you. Bring it on! साऊंड्स ऑन NHK मी स्ट्रीम वरती जास्ती वाजवायचंच नाही मला. Make sure not to steal my targets next. माझ्यासाठी वाजवतोय. गेम कुठला सांग कशाला मी असं वाजव. ओ बाय काय आहे का? ओ इथे. ओ बेबी. आणि असं होऊच नाही शकत. गाण्याचा आवाज पण येतोय. Let's upgrade Itto Supremacy. चॉड बघितला फक्त 19 XP. मग ठीक आहे. पण तरी आवाज येतोय. हे करता करता माझी नाके न होतील. आता काय आहे टॅलेंट अपडेट करायचं. बोर होत आहे. अदर गेम स्ट्रीम कधी. तुला या गेममध्ये बोरच होणार. तुला स्टोरी मोड गेम्स खेळायला नको. स्टोरी मोड गेम मेन आहेत. अदर गेमसाठी कोण हाय पण नाही आज. हा बघ याची कंडिशन बघ. मोबाईलवरून आल्या. अगं अजून उठला पण नसेल. मोबाईल म्हणजे त्याने PC नसेल चालू केलं ना. मोबाईलवरती बघायला आला असेल ऑनलाईन आहे की नाही. भाई एग्जैक्टली 12 बजे ज्वाइन. एग्जैक्ट 12 बजे. एग्जैक्टली 12 PM. अभी हो गया वैसे मेरा लास्ट वाला ही है. मैं कल कौन सा कर रहा था वो कंटिन्यू करके फिर वो आधा हो गया ऑलरेडी. वो ख़त्म करके. हाँ ये वाला है ना लास्ट. छोटा सा ही रह गया ये हाँ. 12 PM एग्जैक्ट 12 PM. 12 बजे एग्जैक्ट. ठंडी पण है रे बाबा. रुको मैं एक कप रख के आया. Guess we can rest a bit. I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back? Ever have a song stuck in your head? Annoying feeling of knowing it, but naam yaad nahi aa raha hai, bro. Arey, it goes like
songs or playlists. Get them right to your library and play them whenever you want. आप अभी भी यही हो? आप ना ऐसे गानों के असली फैन हो ही नहीं सकते। नो चांस। क्योंकि रियल फैंस तो बिल्कुल खो जाते हैं। मजाल है जो मुझे ऐसे इंटरप्ट करने दे। नेवर। इसीलिए तो स्पॉटिफाई प्रीमियम पे शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, वो भी है कि वहाँ अपने दोस्तों के साथ ग्रुप सेशंस पर सब एक साथ सुन भी सकते हैं। अरे, आपका गाना शुरू होने वाला है। चलिए बाय। अब तो शायद आप भी स्पॉटिफाई प्रीमियम ले लेंगे, तो मुलाकात हो ना हो। Produced with Soundtrap. Produced with Soundtrap. Also produced with Soundtrap. You should really bring the Knights of Favonius with you next time. An online music studio that's easy to use, highly collaborative, and works on any device. Try it for free. Just click the banner and get started. Soundtrap, your everywhere studio by Spotify. हेलो हेलो। ये क्या रेसिन के पड़ा है, यूज कर दो हैं? क्या है वो? किधर है वो? क्या पड़ा है? क्या पड़ा है ब्रो? विशाल ब्रो, what is that? You steal me. तुम बताओ मेरे को ऐसा चैट में क्या क्या है। मेरे को इतना मालूम नहीं है गेम के बारे में। It's been too long. I don't know why, but seeing you brings me a sense of peace in these chaotic times. Indeed, it और has गाइस, been a while, Wei अगर Shen. नहीं हो तो I'm flattered, ब्रो but aren't you यार exaggerating a little? I heard that you've encountered some problems and came to see if I could be of some help. My father asked you to come. ब्रो मेरा didn't he? अकाउंट में अगर जॉनली Using his निकल status as a दिया member तो of the chief saint तुम to trouble you. Don't से worry. I'm always happy to help a junior colleague from Yuahai Pavilion. एक सेकंड Not only a competent secretary, तुम चुप but बैठो रे। also a उधर great कौन है? ये mentor. क्या है? पाइमन चुप। हाँ ब्रो, मेरे अकाउंट में अगर जॉनली निकल दिया तो तुम रस सबसे बढ़िया लक। अरे निकल जाएगा ब्रो, निकल जाएगा, निकल जाएगा। ये देखो मेरे पास मालूम है, मेरे पास ऐसा मेरे को लग रहा है कि जो लास्ट के 3-4 दिन रहते हैं ना, लास्ट के उस टाइम तुम जितने भी रह गए ना सब स्पिन कर दो, 10-10 तब गारंटीड तुम्हें मिलेगा। लास्ट के जो 4 दिन रहते हैं ना, वो जो विश का खत्म होने से पहले उधर आता है ना नीचे, 4 days लेफ्ट, 3 days लेफ्ट, ऐसा आता है ना, उस 4 दिन के अंदर तू कभी भी कर ले। मेरे को तो लगता है गारंटीड उस टाइम पे एक ना एक तेरे को कुछ तो मिल ही जाएगा। लाइक 5 स्टार कैरेक्टर तो गारंटीड मिल ही जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ मेरे, क्योंकि ईटो का भी मेरा ऐसा ही सीन हुआ था। मेरे पास 70 फेथ्स है। अरे तो गारंटीड निकल जाएगा भाई। मालूम, मैं इतना गारंटी नहीं दे सकता कि जॉनली निकलेगा, पर कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा, कोई ना कोई तो।
मोस्टली डेली क्यों निकल जा सकता है। अभी घाई मत करो, अभी कलेक्ट करो, अभी सिर्फ कलेक्ट करते बैठो वो, और लास्ट के 2-3 दिन रह गए ना तब सब उड़ा दो। जब तक निकलता नहीं ना तब तक उड़ा दो। एक निकल गया ना तो रुक जाने का। एक कोई भी ऐसा 5 स्टार निकला ना तो रुक जाने का, नहीं करने का, नहीं तो बाकी के सब वेस्ट हो जाते हो। ऐसा मेरे साथ हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। I see. It's not uncommon for merchants to be blind. गाइस जो भी नए हैं प्लीज सब्सक्राइब ब्रो भाई देखो निकला तो पेटी रीसेट हुई। Naturally. मेरा भी तो हुआ ना। Similar issues hundreds of times. Give me a moment to consider the ये देखो best चांस डिली क्यू चीची ये सब चांस रहते ही। ये तेरे को 101% निकले ही निकले कोई भी टाइम पे। लाइक अभी निकले ऐसा नहीं है पर निकलेगी। In that case, I know what you mean, Miss Gagne. पर अगर तुम्हें ऐसा टिप्स ही चाहिए तो लास्ट के 2 दिन तक रुको, 2-3 दिन तक, और तब करके देखो। मैं भी अभी कलेक्ट कर रहा हूँ। कल गलती से मेरा 10 का स्पिन हो गया, मेरे को कुछ इतना खास नहीं मिला, पर अभी मैं वापस कलेक्ट कर ही रहा हूँ। कल मैं ऐसे देख रहा था और गलती से वो 10 का स्पिन हो गया। करे ब्रो मैं अगर तुमको खेलना ही है तो 12 बजे आ जाओ, क्योंकि और एक जन भी है। 12 बजे एग्जैक्ट अपन कॉप में खेलेंगे, बॉस बीस मारेंगे मस्त, अपग्रेड विपग्रेड। अभी के लिए थोड़े से मिशंस रह गए वो कंप्लीट करता हूँ ना, हैंगआउट बिंगआउट। देखो मेरे आईडी है इधर, यूआईडी है, स्पॉन्स कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, कॉपी कर लो, कुछ भी कर लो। मेरे को रिक्वेस्ट भेज दो, फ्रेंड रिक्वेस्ट, मेरे को स्ट्रीम पे बता दो कि तुम हो, मैं फटाक से एक्सेप्ट करके फिर 12 बजे अपन बॉस बीस मारेंगे, थोड़ा चिल विल करेंगे आराम से। नो वरीज। अबे किधर है ये? अरे अंकल। Aha, we meet again, traveler. And you must be from the Yuhai Pavilion? I suppose you're about to place a big order. इस लाइक होना चाहिए गाइस। To offer you my wares. That won't be necessary, Mr. Bolai. Yo. Wanyo Boutique's credit is not sufficient to accept orders directly from Yuhai Pavilion. Should we need to place such an order, we would certainly go to Second Life instead. What? Second Life? Ugh. That rascal Dongsheng. He's stealing all of my customers. Well, Second Life's credit has always been excellent, and based on their tax records, their business is thriving. Tax records? Thriving? ब्रो मेरा दोस्त बोला कि 10 बार राम राम बोल के सारी को सेक्रीफाइस करके कंफर्म मिलेगा। हाँ देखो तुमको जैसा लगता है तुम वैसे कर सकते हो, पर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मिल के दोनों बार वैसे ही मिले। लाइक जो डिली क्यू था मेरे को वैसा नहीं मिला, पर मेरे को ईटो तो वैसा ही मिला। लास्ट दिन में मैंने ऐसा ही एक बचा हुआ था मेरे पास, मैंने स्पिन किया, मेरे को निकल गई ईटो, और मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए था वो। मैं सिर्फ वैसा ही बोला चलो एक है यूज़ कर देते हैं, क्यों मेरे को ऐसा रहता है ना अंदर ही अंदर की, हाँ भाई है तो चलो यूज़ करते, तो वैसा समझ के मैंने कर दिया। मैंने बोला प्रूफ दिखाओ, मेरे अकाउंट में उसने तरह से निकल गए। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, इतना ये भी न मत रखो। Well then, please look over this tax देखो record. गेमिंग बॉय, ये देखो लक फैक्टर है, कुछ भी हो सकता है ये गेम। पता है अगर तुम एक्सपीरियंस्ड होगे, बहुत पहले से खेलते होगे, 1-1.5 साल ऐसा हो गया रहेगा, तो तुम्हें एक्सपीरियंस तो रहेगा ही। इट्स अप टू योर एक्सपीरियंस कि तेरे को कितना पता है उसके बारे में, तेरे को पता ही रहेगा। मैंने बोला पिटी है।
all the documents पिटती related to थी। this transaction. No wonder there was no trace of it. I told you so. Just as I expected. तुम कलेक्ट करो ना और मिलने वाले हैं अपने जो डेली रिवॉर्ड्स है ना, डेली लॉगिन रिवॉर्ड, उसमें भी 2-2, 5-5 ऐसे मिल रहे, वो भी कलेक्ट करके इजी और आ जाएंगे, फिर तेरे चांसेस और बढ़ सकते हैं। इफ यू जस्ट वांट जॉनली लाइक लैंटर्न इवेंट्स कर लिया, कर रहा हूँ, धीरे धीरे हो रहा है, लाइक दिन के कर रहा हूँ, कल के सब हो गए, आज के मैं मोस्टली शाम के टाइम कर लूँगा ऑफ स्ट्रीम या फिर कल ही कर दूँगा क्योंकि उसके बाद के 5 दिन बाद है। सो यस, इन लोगों ने बराबर ये किया। गेम में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जो अनवांटेड रहता है वो पहले मिल जाता है, जो नहीं, जो चाहिए रहता है वो कभी नहीं मिलता है। और रुकने का थोड़ा सा सब्र करके, मालूम है मेरे को भी बहुत ऐसा लालच होता, कल देखने के नादे में मैंने साला 10 फुकट का स्पिन कर दिया। नाइस नाइस अंकल जी। Welcome, welcome. How can an old carp? I am usually happy to take new apprentices, but मेरी यूआईडी है इधर डिस्प्लेड नीचे, रिक्वेस्ट भेज दो। आधे घंटे में अपन आधा 1.5 घंटा अपन थोड़ा सा चिल करेंगे, बॉस बीस मारेंगे। Master Lu, we've just don't worry, I know. You're from the UI Pavilion, right? Why would the Qixing care about an old man like me? और गाइस सब्सक्राइब करो, मतलब जितने लोग चैट कर रहे हो लोग सब्सक्राइब करके कर सकते, तो वो बोलने की बात नहीं है, पर जो नहीं किए हैं सिर्फ देख रहे हैं, चैट करो, सब्सक्राइब भी करो, इजी। Do you still have the invoice or any other record of that transaction? Oh, it's about Second Life. हाय फ्रेंड रिगेल वाला करा सो हार्ड नहीं ब्रो, मैं देखे नहीं इतने, वो नाम, एक तो यही गेम में मेरे को नाम याद नहीं रहते। Of course, but what's that supposed to mean? अभी के लिए जितने भी सामने सामने है ना मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द स्टोरी मोड और हैंगआउट सब स्ट्रीम पे करने वाला हूँ, और जो अपग्रेडिंग या फिर कुछ बुक्स भी चाहिए रहेगा तो सिर्फ मैं ऑफलाइन करता हूँ ऑफ स्ट्रीम। it may be best to get it from the warehouse yourself. इकोनॉमिया मेन है, I'll leave you to it then. इकोनॉमिया, हाँ मेरे को मॉन्स्टर्स को मारने का अभी भी मैंने वो किया नहीं अभी तक, बराबर याद दिला दो। मैं वो भी स्ट्रीम पे करूँगा, आज ही नहीं हो पाएगा, आज कितना टाइम बाकी है, यहाँ पे आधा घंटा, अगर ये ख़त्म हो गया तो थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स को बुला के फिर मज़ा करना है। They must be plotting something against Liyue Harbor. Maybe they're the scoundrels who invaded Master Lu's warehouse. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्वेस्ट बहुत हार्ड है मेरे कैरेक्टर्स के Ever since Osial attacked the, we सामने। won't cause us. Besides, I can already my intuition as the secretary. Then what are we waiting for? Let's go teach him a lesson. ये गेम अभी भी बहुत है, लाइक अभी के लिए इतना सब कुछ है मेरे पास कंप्लीट करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आगे जाके कुछ नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा, यूट्यूब बंद हो जाएगा मेरा। चांस ही नहीं देना है, मर, तेरे को ऐसे ही मारेगा। अभी इसने लगा लिया, हट। I think you've had enough. About time you tell us your plan. ये क्या है, खेत में क्यों है? What plan? We just taught you a lesson, but clearly you weren't paying attention. If you don't spill whatever you're scheming against Liyue, इकोनॉमिया
We'll be forced to इकोनॉमी में detach your मैंने weapons. सिर्फ ये खोला है, लाइक मैप खोल दिया है। लास्ट वाला जो बॉस है उसको ज़रा टोचन देने का है, पर उसके पहले मैं थोड़ा सा अपग्रेड करूँगा मेरे I एजेंट्स must admit. एजेंट्स ने कैरेक्टर। So you have nothing. Vimu Carpenter's warehouse? Where's that? I swear, I only came here to pick berries. That's all. So it wasn't the Fatui who took over Mac. I misjudged the situation and offended you. Exchange? This woman, she's clearly aware that the Ministry of Civil Affairs wouldn't side with us, Fatui. Yes, precisely. As an alternative, you may. Paimon's in! Darn you. How can you wear that solemn face while bullying me like this? What's your choice then? I'll get back to my berries. La 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 la. I made a laughing stock out of myself. No worries. Let's keep moving towards Master Lu's warehouse. बैकग्राउंड में ऐड Our चल goal रही is to है। get the invoice after all. 45 rupees. So this is the warehouse. यार गाना वैसा नहीं है। Nothing more than a few hair churls. Let's show them what we got. Let the show begin. Attaboy! तीनों को ले लो प्लीज। ये भी चीटिंग बराबर है। कंट्रोल स्पॉटिफाई विथ फोन डोंट। मग चॅट कशी बघू ते 50 वेळ कोण खोलतंय? अभी रीइन्फोर्समेंट हेलो कोण आहे अजून? ओ नीचू से भी इनकमिंग। इथे ये, इथे तू इथे ये। फिश Attaboy! It's showtime! All clear. Quick, let's look around for the invoice. This one is. Wangsheng Funeral Parlor. Oh, so they make coffins too. क्या है और इधर? शीश। Catch me. ओ कॉमन चेस पहले। थैंक यू। We finally found it. Let's bring this invoice back to Hoi. आयडिया इज गुड। मैं बघायला लागेल माझ्या मोबाईलमध्ये स्पॉटिफाय लॉग इन आहे की नाही। हो आहे रे। चेंज हेलो गा हसीना। Ah, Ms. Ganyu, you're back. I hope it wasn't too much trouble rushing about like that.
I promise to help you and I'll keep my word. Nothing to worry about. Look, it's the invoice for the transaction between Second Life and Fanmu Carpenters. We've brought it back. Oh, thank you so much. गाइस सब्सक्राइब करके ही जाना गाइस. Agreed. How about we go to Second Life and have a nice chat with the owner? कंप्लीट होने आया कोई ना. पोटला किधर है? Isn't it placing? I told you that all of my transactions are included in the records. My tax declarations are scrupulous as well. I do hope that my business won't be affected by any groundless accusations. Groundless accusations? Mr. Dongsheng, you seem very sure of yourself, but I sincerely advise that you cease this behavior. No. I'm an honest merchant. I would never get involved. गाइस लाइक जरूर करके जाना. अगर स्ट्रीम अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और ऐसा फीलिंग आ रहा रहेगा अंदर से तो शेयर भी करना. थैंक यू. Time for the finishing blow. Mr. Dongsheng, can you tell me what this is? It's an invoice from Fanmu Carpenters. I'm Master Lu. I didn't. Do you admit to tax evasion? This transaction was absent from the tax record. I didn't think you'd find out. I didn't. Indeed. We wouldn't have found out if it weren't for Mr. Boalai's aid. Balai? That imp from Wanyo Boutique? So he told on me behind my back. He's got his own share of dirty laundry. Oh? Mr. Dongsheng, I'd like to hear a little more about this dirty laundry. Oh, new dialogue. Would you care to elaborate? Wow. I don't think you'll need my guidance for what comes काय next. लँटर्न वाटतं त्यार. Yes, thank you. वाटतं लँटर्न वगैरे एकदम सीनरी. I must. Your enemy know to think. You came up with this plan and executed it so masterfully. It's actually one of your father's, the Tianshu's, old tricks. I just took some inspiration from it. My father? Hitting your opponent against their enemies and watching them drag each other down from an advantageous position. That's how Uncle Tian managed to keep his position in the Qixing secure for so many years. I figured that as Uncle Tian's daughter, you'd naturally grasp your father's strategies. So, I decided to use one of your father's tricks and play it out for you to see. I can see it now. I'm really grateful, Ms. Ganyu. Ganyu solved both Huishin's work and Oh, you've helped me so much. You must allow me to repay your kindness. That's not necessary. No need to be so serious. It was nothing, really. Then let me treat you to a meal. The Traveler and Paimon are invited as well. I appreciate your अरे पाइमोन पहले चली जाएगी. Come on, Ganyu. Just say yes. Let's eat. Oh, come on. It's just a meal. बुक्कड़ पाइमोन. If it's just a meal, there's no reason for me to decline. It'll be my pleasure, Huishi. Actually, I've already booked Senor Kiosk. I need a moment to prepare everything first. Let's meet there in a while. All right. पंछी बनूरता फिरू मस्त गगन में. आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमड़सियाँ. मोस्टली मिल्टन आपलं हे डिस्कॉर्डचं हे जास्ती स्पॅम नको करू. ते अजून असं फुल्ली पब्लिक मेड नाही आहे. ओ भाई अरे काय पूर्ण लग्न आहे काय?
Miss Ganyu, thank you for accepting my invitation. Sure. That's so kind of you. Oh? No, I don't really need help. With pleasure. Even though I have the utmost respect for my father, I always admired how gentle and reliable you are. I've only decided to join the UHI Pavilion staff because I've always looked up to you. I didn't know that you think so highly of me. I'm on booked. However, in reality, working at the UHI I'm on his main man. I can't compare myself Tichi to tak such an outstanding secretary like you. I disagree. Over the years, I became a mother, too. Huh? So Uncle Tian is a grandpa! Influenced by my youthful ideals, she followed my foot. At first, I was worried about her. It's not an easy job, after all. To tell the truth, I'm still unsure if she's capable enough. But after all that happened this time, I've made up my mind to support her choice. So, what made you change your mind? The fact that she'll have you, Ms. Ganyu, as her senior colleague. You'll help her, gentle as always, and tell her your mom used to do it like that. It'd be such a beautiful moment. If it's not too much to ask for, she might still need your guidance in 20 plus years, too. Huishin, I never thought that I meant so much to you. Just like when you showed me my father's trick. Having you as their witness makes people feel at ease. Witness? It's true that I've witnessed thousands of years of Liyue Harbor's history. All the changes it's gone through, the stories of its people. But I've always regarded it as nothing more than the source of my loneliness. Huishin, you don't know how important those words are to me. You've made me realize that I share another connection with the people of Liyue Harbor. Apart from my contract with Rex Lapis, they rely on me, accept me, and long for me to bear witness to their stories. Oh, of course. You're irreplaceable to us. That's right. That's why I can't disappoint you. Hooray! Ganyu's finally cheered up! Even if I've really been supplanted, I wish to fight for my place. I won't let you down. I'm going to fulfill my contract and keep working as the Qixing secretary. Okay. Regardless, I'll go back and see for myself. I'm afraid that it might have all become a mess during my absence. No time to waste. Let's get back to work. Good luck, Miss Ganyu. बस हो गया ना कितना काम करती है किधर जाना है जेड चेम्बर अच्छा जेड चेम्बर के मलबे की तरफ एक सेकंड गाइस मेरे को एक मैसेज आया मेरे को उसका रिप्लाई देने दो ओके अरे Baisha, are you okay? Did you fall asleep? Look who's back. आ गया You have enough time for leisure? चीपन है के लल It seems you three are a suitable replacement for me after all. Not at all. We've been working for too long.
If we didn't take a break, we wouldn't have survived long enough to see you again, Miss Ganyu. Miss Ganyu, we've missed you. That's so kind of you all, given we've only met once. we've been praying day and night for you to return and take over your duties again. To us, you're like an adeptus coming down to the human world to save all life. Forget all our envious complaints from before. Just free us from this strenuous work, please. All right, I see. Please divide the matters at hand into government affairs, business affairs, and civil affairs. Mark out the tasks that haven't been started, and those that are in progress. I'll take care of the rest. ये भी Of ठीक है. course. We'll do it right away. Oh, finally. We're saved. Yes. There's one more thing. I'd like to earnestly thank you, Traveler. If it weren't for your companionship, I would still be embroiled in my inner conflict right now. ये भी ठीक है. To think that I'd gained a human friend outside of work. It makes me happier than I could have imagined. I'd like to repay you when I'm done with the work at hand. What would you say if I accompanied you on one of your trips? Sure, but are you ever done with work on you? Let's cross that bridge when we come to it, shall we? Okay, man. गाइस आ जाओ. आईडी देख लो, आ जाओ. जिसको भी आना है खेलने आ जाओ. अल्फा बॉयज ओपन. इफ कोई अभी चैट में होगा तो. क्या कर रहा है ये? क्या है? जेड चैम्बर ही है ना. मेरे को देखने दो कितने कलेक्ट हो गए. वो बहुत हो गए बे. टॉप चुपचाप ले लेने की. गाइस एक बड़ी सलाह दे रहा हूँ, ये वाले कभी भी यूज़ नहीं करने के, क्योंकि इधर बहुत माल पड़ा है. 24 एक अच्छा सा कैरेक्टर मिला तो उसके पीछे बहुत मिलता है माल. चुपचाप रख देने का, कुछ नहीं करने का. जोंगली चाहिए मेरे को भी. डिटेल्स ये टट्टी दे दिया ना भाई. सच में बोल रहा हूँ, मैं गेम बंद कर दूंगा, छोड़ दूंगा, स्ट्रीमिंग ही छोड़ दूंगा. ये वापस दिया तो नहीं चाहिए मेरे को. 4-4 5-5 बार मिल के बैठा. ओनली है मेरे को. चीची भी नहीं चाहिए मेरे को. मोना जीन ये भी नहीं चाहिए. क्या है, अच्छे कैरेक्टर्स है ही नहीं क्या भाई? आ जाओ क्या आपके वर्ल्ड में. हाँ आ जा ब्रो. नाउ आई एम ओपन. और 2-3 मिशन क्वेस्ट बाकी है, पर कल कर दूंगा. कल वैसे भी शॉर्ट स्ट्रीम होगी तो ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ आ जाओ. आई एम ओपन. खुला है अल्फा बॉय. चलो कान में सब सन आवाज का येतोय. चाड़. इसे एक सब्सक्राइबर बाकी 65 से. एक सब्सक्राइबर मार दो और फिर 5 सब्सक्राइबर बाकी 70 से. चाड़ ऐसे ही प्रमोशन. मुझे इधर क्या था ये? से अनेबल टू ज्वाइन. अरे हाँ मैंने वो बंद कर रहा. एक सेकंड रुको.
ये आज नहीं होने वाला है, बहुत दिन है। हेलो इटोमियन, इटोमियन नहीं हूँ मैं इटोमियन नहीं हूँ। इटो तो अभी अभी है। हाँ अभी करो। मैं डेली क्यों मेन हूँ, मतलब हाँ हूँ तो सही। वाह ये कौन है? अच्छा ओके चंद्रा। ओके ओके मैंने देख लिया चंद्रा मौली। ओके देख लिया आ जाओ। दिख क्यों नहीं रहे हो चंद्रा भाई? चंद्रा भाई ओ आगे। हेल्प चाहिए कुछ? हेल्प नहीं, हम लोग तो अभी ऐसे ही टाइम पास करेंगे थोड़ा। एज ए सब्सक्राइबर्स आने चाहिए ना थोड़े से बॉस को मारेंगे, थोड़ा चिल करेंगे। अबे किया ना, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हुआ कि नहीं? आ गए ना चीची। ओ भाई अरे कितने जन आ गए। ये भी सही है। क्या करना है बोलो? यो करते हैं अभ्यास, चलेगा मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर कैसे लगाओ? कौन सा अभ्यास? मेरा अभ्यास का कितना मालूम नहीं। अबे फ्रेंड रिक्वेस्ट है। ओके फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं मेरे, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे, फ्रेंड्स भी बढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। एडिट प्रोफाइल बेस 6-1 क्या है मालूम नहीं मेरे को, ये पता ही नहीं। बेस कॉम्प मोड में नहीं होता। हाँ वही मोस्ट लाइकली डोमेन्स कर सकते, सिर्फ सादे वाले ये भी नहीं कर सकते। देखो देखने दो, स्टार्ट एक बार देख के आता हूँ। अभ्यास नहीं होता। डोमेन हाँ चलेगा। इटो बिल्ड दिखाओ। अरे मैंने नहीं बिल्ड किया ब्रो, मेरा बिल्ड नहीं है अच्छा। ये देखो मैंने कुछ भी रख दिए। ये देखो मैंने सिर्फ ये अटैक का थोड़ा ज़्यादा देखा और डिफेंस का कम देखा, तो मैंने रख दिया। मैं बोला ठीक है। डेली को भी मैंने हक दिया है। देखो 200 ही है। ये मेरे को नहीं समझता क्या है। किसी का भी ऐसा ठीक नहीं है, सबका ऐसा अंडू गुंडू ही रख दिया। चाइल्ड कहाँ से हो भाई? फार्म करना है ईटो के लिए? हाँ चलो करते हैं। कौन सा लगेगा बोलो, किधर है? मेरे को इतना मालूम ही नहीं, मेरे को वो आर्टिफैक्ट्स के बारे में इतना कुछ पता ही नहीं। मतलब कौन सा कितने के लिए लगेगा मोस्ट लाइकली। एक सेकंड The sweet, sweet taste of victory. And that's why I've never spent a single mora on any of my snacks. I've won them all fair and square. सेट फॉर अल्फाबाई चैट पढ़ के आंसर भी देना होता है। अरे सॉरी ब्रो, अरे मैंने देखा ही नहीं। कहाँ से हो भाई? अरे मैं मुंबई से हूँ भाई। अभी वो इतना सब दिख रहा है ना, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे रहा। सॉरी ब्रो। इनाजुमा में है। ओके देखते हैं इनाजुमा में इधर है। ये वाला नहीं, ये तो ये है आर्टिफैक्ट। ये वाला नहीं, ये भी नहीं है। ये वाला
रिंग काउंट वाला लोकेशन बोलोगे मेरे को भाई? लोकेशन बोल दो, मैं उधर देखता हूँ. सर काही नाव सांग. AlphaBoii टीपी मार दो भाई उधर, फिर एक साथ ही देख लेते. किधर है देखो? तुम हो ना? तुझं नाव काय सांगू? ब्रो नेम रीडिंग नहीं. नो नेम टेलिंग. टीममेट से पूछो, शायद पता होगा. क्या पूछूं? कम ऑन डिस्कॉर्ड. ये क्या डिस्कॉर्ड पे कोई नहीं है. ओके. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Can't catch me. ओके ओके ब्रो, मैं रिक्वेस्ट भेज दूंगा. अभी के लिए 3-4 जन है पूरे. फॉलो इधर है ये. ओके इधर है. ओके ये अच्छा. ओके ये है. ओके 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 ये वाला है. अरे बस फ्रेंड लिस्ट में ऐड करो. मैं ऑफलाइन हूँ वैसे भी. हाँ मैं कर लेता हूँ. अभी के लिए मैंने कॉपी पेस्ट करके रख दिया. स्ट्रीम खत्म होने के बाद मैं कर देता हूँ ऐड. हाँ ये है ईटो का सेट. पर ये है ना, एक सेकंड में. सच में इधर ईटो का सेट मिलता है? ओ भाई यहाँ रे. ओ माय गॉड. इसमें नहीं मिलेगा ना? ये मिलता है पर यही करेगी. कॉप क्या क्या लगेगा? I wonder what the rest of the harbingers are up to. Plotting and scheming on an ever grander scale. मेरे पास थंडर नहीं है ठीक वाला. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. हाँ 90 लेवल पे कर रहा हूँ. अभी इतने सारे लोग हैं तो क्या ही. रुको मेरे को चेंज करने दो. अभी वाटर ही नहीं है वहाँ. वाटर लेता. ठीक है. ये क्या मैसेज डाला था? अरे एक तो मेरे को दिख नहीं रहा है भाई. मेरे आँख खराब हो गए शायद. ब्रो थैंक यू. हाँ वेम ऑफ हेल, थैंक यू फॉर टेलिंग मी. इतना सब कुछ मेरे को नहीं पता. ये इतना सीरियस लेवल पे बोल रहा हूँ. मेरे को ये आर्टिफैक्ट्स और उसका क्या बिल्ड है. अबे ईटो हाँ, ईटो हाँ. मेरे को सीरियस लेवल पे नहीं पता ये सब कुछ. ईटो आँख की आँख. वो देखो क्या डैमेज लग रहा है. Freeze to the core. Rack and ruin. Let's dance. मैं हील कर रहा हूँ भाई. मैं सोचा तुम्हें बचेगा. तुम तो पड़
पता ही नहीं। नहीं नहीं मेरे को इतना नहीं पता, पर तुम चैट में पूछ सकते हो, क्योंकि चैट में मैंने अभी देखा बहुत सारे ऐसे लाइक मालूम है उन लोगों को सब कुछ कि क्या क्या है, उनको तो ऐसा पूछ सकते हो अगर लगे तो। ईटो का डिफेंस ज़्यादा देगा क्योंकि उसका अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ मेरे को ये पता है, ये चीज़ मेरे को पता है। मेरे पास तो ये भी है, लिस्ट भी है कि कौन सा किधर किसके लिए लगना चाहिए, पर मेरे को ये नहीं पता। मेरा ईटो एक बार दिखाओ एक बार ही। हाँ रुको मैं देखता हूँ, ये ख़त्म होने दो। ये मर गई। ए मेरे को नहीं, मेरे को नहीं। ए मम्मी है, मैं हीलर हूँ उनका भाई, मेरे को क्यों? अरे क्या हो गया? इसमें मैं तो यूजलेस ही हूँ भाई, मैं तो हील ही करते बैठूंगा। ये मजा है, कभी मदद चाहिए हो तो बुला लेना। अरे भाई आगे जाके अभी साथ में ही रहना है। हाँ पर ऐसे डोमेन्स करने के लिए बुलाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। ए मेरे को नहीं, मेरे को नहीं। देखा अभी ऐसा एक साथ भी फार्म भी कर सकते हो। अच्छा है। इन मॉन्स्टर को फायर वालों से नहीं मार सकते, पायरो वालों से इजी पड़ जाता। मेरा डैमेज कितना पड़ रहा है? मेरा 80। शीश, ये क्या डैमेज है मेरा? तो दिखाओ रेफरेंस के लिए। हाँ मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड रुको ना। ये इधर चुपचाप बैठ गए इधर, तो इधर सब मर जाएंगे और मैं अकेला कुछ इतना कर नहीं पाऊंगा। खत्म होने तो ये मरता क्यों नहीं है? बैठा ना, अरे पर नसीब होना चाहिए ना वो मिलने के लिए। नसीब की बात है भाई वो।
चीची चाहिए हीलिंग के लिए। मेरे पास नहीं है ना चीची। मेरी बार्बर इतनी अच्छी है, मैंने अपडेट की इसलिए, नहीं तो वो भी नहीं। ए इतना ही है बाकी। ए जल्दी मारो। ए 1 सेकंड। भाई इसके लिए टाइम लिमिट भी रहता है? सीरियसली? मैं लाता हूँ, नहीं हुआ तो ये बाहर निकलो। बाहर निकलो। मेरे डिस्कॉर्ड पे है क्या? मेरे को अलग डिस्कॉर्ड बनाना पड़ेगा शायद। भाई पर टाइम लिमिट क्यों है इसमें? चीची आगे तो मैं कुछ पढ़ना के दर्द करता हूँ। ओके लेट्स सी, ये चल जाएगा ना? चीची Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. You know, there are better ways to seek out our enemies than, well, standing here. स्ट्रीम खोलोगे तब दिखा लेना। मैं भी लूँ क्या इट्टो? मैं भी लेता हूँ। मैं भी लेता हूँ। फिर इसने लिए हैं। नहीं मैं नहीं लेता। Favonia's blade work? All right then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. अभी अंदर डोमेन में जाके करता हूँ ना। मालूम है मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। एक सेकंड अभी। हाँ चलो। टाइम लिमिट इज द मेन थिंग जो दिमाग में जा रही है इसमें। इन लोगों का लोड हो रहा है क्या? ओ आया का इज कमिंग। नहीं कितना आगे जाइए। ये गेम एक तो प्रॉब्लम है ना, ये गेम में दिमाग भी लगता है पर जो मेरे पास है ही नहीं। द मेन थिंग इज दैट मेरे पास दिमाग नहीं है, इसलिए मैं यही बोलूँ। अरे यहाँ रे कौन है चीचू? ये मर नहीं रहे, ये कौन से चक्की का आटा खा के? ये मरते नहीं, ये 5 मिनट भी कम है इनके लिए। मेरे को लग रहा है मेरे को मेरी कौन है वो
ये मैं हील हो रहा। अच्छा हाँ चीची। किधर गया बे? भाई ऐसा डैमेज दे ही नहीं है डोमेन, मालूम है मेरे पास और कुछ है ही नहीं। एक सेकेंड कॉल आया मेरे को। मेरे पास और कुछ है ही नहीं ना, ऐसा डैमेज देना जैसा कुछ है ही नहीं। बस रहता तो मैं अब तक कहाँ पहुंच जाता। इसलिए ये वाला कॉप में कर सकते हैं, मतलब लाइक मैच मेकिंग भी है इसमें। मैं देखा, मैं कभी ट्राई नहीं किया ये सब कुछ। अबे ये क्या है? मेरा सब ऐसा अपग्रेडेड है, पर मेरा सिर्फ क्या मार खाती है, मेरी सिर्फ आर्टिफैक्ट्स मार खाती है। मैंने आर्टिफैक्ट्स कुछ भी रखा है सीरियस लेवल पे। मेरा कभी 2000 डैमेज मैंने देखा भी नहीं है। गया खत्म। मैंने कभी मेरा 2000 डैमेज भी नहीं देखा। Cold. So cold. क्या हो गया? बाहर निकलो क्या? मेरे को ऐसा बोलो ना, मेरे को कौन सा ऐसा आर्टिफैक्ट लाइक डेली क्यू या फिर ईटो का तो अभी तुमने बताया, ये ठीक है, ये मैं करता जाऊँगा बीच बीच में। क्या डेली क्यू के लिए क्रिम्सन विच। क्रिम्सन विच, वेयर आर यू? शिश, मेरे इधर तो नहीं मिलेगा शायद। क्यों के लिए क्रिम्सन विच, ये सब कुछ मेरे को बाद में बैठ के करना पड़ेगा। इधर है क्या? Hey, I wasn't ready. लियन में है, ओके।
अबे इनसे क्यों फाइट ले रहा हूँ मैं? टप। मेरे वर्ल्ड में चले। तुम्हारा वर्ल्ड क्या है? कितने का है? फ्रेंड्स। कौन हो तुम? तुम हो कौन? चंद्रा। अबे तुम्हारा 6 है भाई मेरा। Arataki numero uno Itto here in the flesh. तुम्हारा 6 है। सेकंड ये भी नहीं किया मैंने अब तक। शीश। ये सब करूँगा तो अभी स्ट्रीम में ही बैठ के करूँगा सब कुछ मुँह के सामने। मतलब इतना तो समझेगा कि मेरे को क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं। ओ भाई ये क्या है? Best flavor in the Hidden world. place The of sweet, sweet taste of victory. And that's why I've never spent a single Zoo moron on formula. my snacks. I've won them all, fair and square. कर गया। That's right. ये बाय मिल्टन। एक ही मार खाता हूँ मैं हर बार। सॉरी भाई मम्मी का मोबाइल है तो मुझे लीव करना पड़ेगा। Don't underestimate the beetle. They can be some of the toughest little guys around. Yes, you can. Yes, you can. Want to know what's on this beetle's diet? अभी तो बोला ये मम्मी का मोबाइल है इसलिए जा रहा है। That's how it gets stronger. I think we can all learn something. राइजिंग को क्राफ्ट करके दूसरा वाला बना लो। किसको? ये एक तो नए नए वर्ड है ना मेरे दिमाग। ओ फ्लेम। हाँ आजा। एक तो नए नए वर्ड है ना ये दिमाग में जा रहे हैं ना ऐसा धक धक हो रहा है मेरे को। मैं बोल रहा भाई क्या है? फार्म इज एंटर्ड। गुड मॉर्निंग उचिची उचिची। क्राफ्टिंग में जाओ बताता हूँ। ओके रुको तुम पहले मेरे को बताओ। एक सेकेंड गाइस यहाँ रहा। मेरे को ना अभी एक ऐसा डिस्कॉर्ड सर्वर बनाना चाहिए जिसमें सिर्फ जेंशिन इम्पैक्ट। ट्राई 69 क्राफ्टिंग में। ओके क्राफ्टिंग में है क्या बे? क्राफ्टिंग में क्या भाई? तू रेसिंग कैसे फुल होने दे सकता है? फुल मतलब क्या मालूम? नहीं पर वो फुल नहीं, वो फुल से भी एक्स्ट्रा था। फुल से भी एक्स्ट्रा था क्या मालूम मेरे को। कुछ तो मैंने रिडीम किया था उसके ऊपर मेरे को बहुत मिले थे। 500-600 हो गए थे। से लास्ट वाले पे जाओ। ये स्क्रॉल सर्वर है तो बुलाओ आता हूँ बता देगा। सर्वर मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ब्रो। अभी नहीं कर पाओगे। पहले लियन में रेपुटेशन लेवल 2 करके एसन फुल 60 हुआ है ना मत होने दिया कर। अबे नहीं वो क्या हुआ था पहले एक बार ना मैंने कुछ तो चांद जैसा है ना चांद जैसा कुछ तो है वो मैंने गलती से उसको ये कर दिया तो मेरे को कुछ तो उस पर 600-700 मिल गए थे।
तो वो कम करते करते अभी जाके 160 हुआ है। Can't catch me. वो मेरे को अभी याद आया। और फ्रेम क्या कर रहा है ये? वो मेरे को अभी याद आया बराबर। हाँ मैं यूज़ नहीं किया ब्रो। कैरेक्टर लिस्ट कौन सा ज़रा एक बार खोलो, ज़रा एक बार कैरेक्टर लिस्ट। इसमें से सच में दिमाग उड़ जाने वाले में से। ये देखो टू सर्वर मेरा जो सोशल करके ऊपर हेडिंग लेगा ना, अल्फा बॉय सोशल, उसके अंदर ही डिस्कॉर्ड है, उस पे आ जाओ। That's right. सीन क्या तुम लोग बता रहे हो इसलिए मेरे को इतना तो समझ रहे कि भाई इसमें ये करना। ये तो आर्टिफैक्ट्स के पहले ही मैंने मार के रखी है मेरे। जो अच्छा दिखा वो उधर डाल देने का, खत्म। किसके लिए फार्म करना है, ईटो या ड्रिल? ईटो कर लेता हूँ पहले, डिलीक्यू भी हो जाए ब्रो। डिलीक्यू बिल्ड मत करो, अच्छा नहीं है हम, इसलिए मैं इसको ईटो बोला ना। ये हो गया ऑटोमेटिक। ये देखो मेरे तो मिशन देखो, ये देखो ये देखो ये देखो, बहुत है, बहुत कुछ है अभी भी, आराम से करने का है। अरे टकी टीम बनाओ मत। इज राइट, डिली क्यों अच्छा नहीं है, बहुत अच्छी है। फॉलो Toughest little guys around. Yes, you can. Yes, you can. Want to know what's on this beetle's diet? Sweat and tears, that's what. That's how it gets stronger. I think we can all learn something from... Yuki is a waste of... Okay. Penny is the best character in this game. हाँ मेरे पास है। मेरे पास है, मैनिटिथ है। मैच करूँ कि कॉप खेलूँ? मैच करूँ ना। मैच करूँ ना। Want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. अबे ये क्या हो गया? ओके कॉप कंफर्म इनवाइट। ओके सब आ गए। ओके इनवाइट। Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? 50. किसी के पास हीलर है या फिर मैं ही लूं? अच्छा यश तो हीलर है ब्रो। ट्रस्ट मी व्हेन यू रीच AR55 यू विल। हाँ क्या सीरियसली? Every journey has its final day. गेम के इतने एहसान तो चाहिए कि मेरे को अच्छा से कैरेक्टर दे दो रे पापा। बेनिटिक है हीलर, हाँ पता है। अभी मुझे बताओ कि बेनिटिक का जगह खाली हो तो अभी के लिए इतना सही करते हो।
क्योंकि ये बहुत बड़ी स्ट्रीम होगी। कितने घंटे की होगी ये? 2 घंटे की होगी? नहीं, अभी 3 घंटे हो गए। आँख की आँख वाट लगा दी। क्या डैमेज है ना मेरा, इतना प्यारा सा डैमेज। मर रहे हो रहे। अच्छी टीम है, अच्छी टीम है। हो रहे खत्म हो रहा भाई। कितनी देर के लिए ये लोग वर में ये हो रहे। टीम अच्छी है। भगवान इतना एहसान कर दो कि मेरे को ये नेक्स्ट इसमें जॉनली दे दो। वापिस दुनिया फेंक के मारी इसने। एक सेकंड रुको ब्रो। चार्ज अटैक विद इटो इज नॉट नॉर्मल। नहीं समझ रहे कुछ। अभी तुम सोचो मैं कैसे इतना ऊपर पहुंचाऊं। ओके। मतलब नेक्स्ट टाइम मेरे को ये सब कैरेक्टर भी याद में रख के इन लोगों को अपग्रेड करना है। ओके अभी किधर फेंक के मारा? और इधर हो गया, ये भी ठीक है। चार्ज अटैक करो, नॉर्मल अटैक नहीं। हाँ मैं वही कर रहा हूँ। वो बढ़ने तो दो। है फिर भी ईटो का डैमेज है, दिख रहा है मेरे को। थोड़ा थोड़ा मार रहा है। 1000 का आंकड़ा पार कर रहा है, इसलिए कोई है नहीं। एक 1800। ब्रो आप नॉर्मल अटैक कर रहे हो, प्रेस लेफ्ट क्लिक फॉर 2 सेकेंड्स। ओके ये भी नया था। थैंक यू प्रतीश, राइट नाम है ना? थैंक यू, यूर रियली सपोर्टर। ये क्या मिला बे? टोपी? ये टोपी ईटो के लिए? ये क्या है? ओ भाई है बे, सामान है। शीश वे। एक सेकंड रुको, जरा हील मार के आता हूँ बे। हाँ क्या? अरे वाह भाई। ओ अभी मेरे को याद समझा, अभी इतना अच्छा लग रहा है मेरे को। अभी मेरे को ये क्या मिला? मेरे को ये टोपी क्या मिली? इधर गई फ्लेम, क्या इसका नाम अपना? तू चैट में है क्या ब्रो? वो नहीं चैट में। ये टोपी क्या मिली मेरे को? ईटो के लिए? एक टोपी ईटो के लिए है, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये ईटो के लिए है। ईटो का आर्टिफैक्ट है वो, पर बेकार है। ओके हाँ ईटो के लिए। नो दैट इज नॉट फॉर ईटो।
पर बेकार है। ठीक है, मतलब ईटो के लिए वो ठीक नहीं है। ठीक है, बराबर, याद रखता हूँ। ओके, आ गया कन्फर्म। इनवाइट, वो किधर है? हाँ, आया। Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? वो किधर है? Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. मैं भी ऑनलाइन में फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो कि रुको, यहाँ आ रहा है क्या? इन कॉप, ओके चलो, अभी के लिए ये कंप्लीट करता हूँ, फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट तुमने भेजा है ना ऊपर, हाँ कॉपी पेस्ट। सब तुम्हारे भरोसे भाई, तुम लोग ही मेरे को बताओ। ओ भाई हो गया, टीम इज ओके, स्टार्ट। ओके स्टार्ट, 30 नाम है यहाँ, ओके ठीक है, मैं कर रहा हूँ अभी। नेक्स्ट टाइम से ना ऐसा स्ट्रीम करूँगा ना, 1-1.5 घंटा में मेरे जितने मिशन है वो कंप्लीट करूँगा, और तुम लोगों को फिर नेक्स्ट इसमें अगर फ्री होगे तो आया करो, मेरे को बताया करो, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताओ ये गेम में। हाँ बताओ ब्रो, चैट इज ऑल योर्स, मतलब बोलो। आजा ब्रो, अरे उड़ के मत आ ब्रो, उधर ही मार मारी चालू कर दी इसने। मेरे पास तो इतने ढंग के ये भी नहीं है, क्या बोलते हैं, बे ये 400 डैमेज, जिधर सब लोग मारे उधर ही मारता हूँ, मतलब मेरा डैमेज दिखेगा नहीं। चौ पर मेरे को मेरा डैमेज दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छा मार रहा हूँ मैं। मैंने ऐसा भी सुना है कि ईटो के लिए, अगर ईटो को ये करना रहेगा तो उसके लिए और एक मेरे को उसके ही बराबरी वाला रखना पड़ेगा, लाइक उसकी जात वाला, जियो वाला कोई कैरेक्टर। ऐसा सच है? अरे मैं मर गया, मैं मर गया। ओके मेरे को ऐसे ही देना है ना। AR45 मुझे 13 XP लगता है। क्यू क्लिक दबा रखो, क्यू दबा के लेफ्ट क्लिक दबा रखो। ओके क्यू दबा के लेफ्ट क्लिक दबा के मेरे को, ओके ये याद रखूँगा मैं। गुरु के साथ ईटो का, हाँ ये लिंक रखो, पूरे टीम पूरी है, मतलब ये तीनों। ये तीनों अगर मैंने रख लिया तो लाइक इट्स हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। मैं मर गया हूँ, मेरे को कुछ मिलेगा? मेरे को ना एक और एक ऐसा ये चाहिए, लाइक जॉनली अगर मिल गया तो अच्छी बात है,
या फिर मुझे कोई तो ऐसा दे दो जिसमें थोड़ा ज़्यादा डैमेज रहेगा। लाइक अभी के लिए मेरे पास तो एक ही है जो मोस्टली थोड़ा बहुत डैमेज दे सकते। दो है, समझा क्या? मैं चैट में बज हाँ भेजा। ओके ओके ठीक है ठीक है। मेरे को समझा ऊपर वाला पढ़ा मैंने। वो सांप छोड़ के सब कुछ समझा। हाँ ना, मिलना तो चाहिए, देते नहीं है। एक तो कितना लेवल बाकी है इसका? भाई बहुत है बे, ये मार पाएगी क्या? रिट्रेड बाकी क्या होगा? क्योंकि मैंने कभी ऐसा कॉम्प मोड में खेला नहीं है ये सब कुछ। रिट्रेड दबाए तो क्या होगा? केबीसी इज ऑन। भाई मेरे 69 सब्सक्राइबर हो गई। एक सब्सक्राइबर चाहिए गाइस 70 के लिए। एक तुम लोग हो, सपोर्ट दे रहे हो, मेरे को सिखा भी रहे हो कि क्या 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 नहीं है। अच्छी बात है, थैंक यू, आई अप्रिशिएट। मेरे को मैसेज आया, रुको। कौन है बे? गाइस देखो, मैं ना अबेंडन करो। वो डिडंट आई थिंक आई फॉलो इंडियंस प्ले जेंशिन, यू गाइस आर ऑसम। अरे थैंक यू ब्रो। सब इंडियन ही है, और यश इंडियन है, फ्लेम इंडियन है, इधर और भी 2 3 4 5 6 जन है जो जेंशिन खेलते हैं और मेरे को बता रहे कि कैसा क्या है। अभी मैं सच बोलूं, मेरे को भी ऐसा दिमाग में आ रहा है कि मैं AR45 कैसे हुआ। ओके चलो, अबेंडेंट ही हो गया। टाइम अब है। हाँ मैं वही देखा। रुको प्रतीश, तुम्हें ऐड कर दो। रुको, रैंडम कौन है इसमें? ये रैंडम है ना? प्लेयर्स आर बिटवीन सीन्स। ओके ओके। मैं ना एक ऐसा सर्वर बनाता हूँ जिसमें सिर्फ अपन ही। हाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट में डाल रहा हूँ। रुको, अच्छा तुमने डाला है क्या? ओके दिस्ट बाबू 57 कैसे कैसे मेरे दिमाग में नहीं जा रही है। ये निकला कि नहीं? हाँ निकला। अभी इनवाइट भेज प्रतीश, इनवाइट भेज, मतलब ज्वाइनिंग का इनवाइट भेज। हटाओ सबको बोला। हाँ रैंडम को हटाया। ये यश भी रैंडम है कि अपने इसमें से ही है? वाई ओके, आजा आजा। अभी देखते हैं, अभी लगाते हैं इनकी। और कोई है? ये यश अपनी टीम में से कि और कोई है? ये यश रैंडम है। ओके रैंडम है, हटा दिया। रिक्वेस्ट भेजा। इज एनीवन गोइंग फॉर जॉन्डली और सेविंग फॉर फ्यूचर? मे बी मैं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे को भी बहुत पसंद है वो, पर देगी कि नहीं पता नहीं। ओके कप में लगाना पड़ेगा। गॉड जॉन्डली जलाओ मत मेरे को प्लीज प्लीज प्लीज, जलाओ मत। दिल में ऐसा ये होते हैं, दुखते हैं कभी कभी। मोस्टली ये लास्ट रहेगा क्योंकि 1 बजने आए हैं और 1 बजे मेरे को बंद करना पड़ता है। ले लो जॉन्डली मिले तो सबके साथ काम कर। इटो है तो अच्छा होगा। ओके पॉप मोड आ गया ना बंदा? आ गया। इनवाइट आ गए, सब आ गए। मैं ईटो लूँ कि कुछ और लूँ?
मैं कुछ और लूँ भाई? वो रुक, कुछ पता ना भाई, कुछ पता क्या बताना है? मैं क्या लूँ? मेरे पास ऐसा अच्छा डैमेज डीलर नहीं है। मैं ये लूँ, रेजर लूँ। But where are those who share the memory? गुरु है टम्पे। ओके नाइस, मैं ये ले लूँ। Astrologers must rid themselves of material desires. Only by ridding oneself of clutter can one see the true world around them. हीलर मेरे पास नहीं है ना, हीलर का ही तो प्रॉब्लम है। हीलर कौन सा लूँ? ये लूँ? ये हील कर पाएगी? I got Itto, so no only for me this time. But where are those who share the memory? फ्लेम के पास हीलर है ना? बारबरा लूँ? ठीक है, बारबरा ले रहा बारबरा ले रहा, टेंशन ना लो। तुम सिर्फ बताओ मेरे को क्या लेना है, पर मेरा इतना डैमेज नहीं रहेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। मेरा इतना डैमेज नहीं रहेगा, सो दैट्स मेरे को अभी ऐसा करना पड़ेगा। मेरे को एक का बिल्ड देखना पड़ेगा, कौन सा कैरेक्टर अच्छा होगा फ्यूचर में मेन लाइनअप के लिए, देखना पड़ेगा सब। ओ भाई हैं 20। अभी ये कौन है? इतना कैसे मारा इसने? हीलर बोलते, हीलर करते, मजा आ रहा है। ये मर भी, 4 जन मर भी गए। अभी ये बंदा नहीं भगवान है। ये कौन आ गया टीम में? भगवान की कसम भाई, 2 जन इतने फटाक से मार रहे, 2 भी नहीं 3 जन मार रहे भाई। वो मेन को लो। किसको हील चाहिए? अच्छा मेरे पास आ, इजी हील। रुको, 4 जने दो, 4 जने। फिश। एक सेकेंड, मैं चैट पढ़ रहा हूँ, रुको गाइस, चैट पढ़ रहा हूँ। I got Itto, then Mona, and I'm saving only used all my wish yesterday and got pulled in 41। मेरे कान में उंगली टक। कितने दिन है? 20 दिन है ना अभी भी 20 दिन है ना, हो जाएगा। ए मेरे को कुछ तो मिला, ये है क्या? ये कोकोमी का है ना, ये कोकोमी के लिए ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है ब्रो। सागर कालाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। ये है ना गाइस, रुको देखो सुनो, मैं आज बैठ के शाम को एक ऐसा सर्वर बनाता हूँ जिसमें सिर्फ अपन ये बोलेंगे, जेंशिन वाली सिर्फ बोलेंगे, और जब भी ऐसा एक साथ खेलेंगे ना, तब गुरु कहाँ आता है? हाँ क्या? Since I am a low PT, might go for क्या? कहाँ से नेक्स्ट? बारबरा को सारे HP और हीलिंग बोनस दे दो, आर्टिफैक्ट्स। ओके ठीक है, ये याद रखता हूँ। मैक्स लेवल 80। ओके नाइस।
ओके ये सब पढ़ लिया। फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये क्या है इतने सारे? आ जाओ, सब आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Underestimate the beetle. They can be some of the toughest little guys around. Yes, you can. Yes, you can. Want to know what's on this beetle's diet? Sweat and tears. That's what. That's how it gets stronger. कम फास्ट। ओके आ रहा उधर। Learn something from that. मैं डिस्कॉर्ड सर्वर बनाऊंगा, टेंशन ना लो। डिस्कॉर्ड सर्वर बना के फिर अपन उसमें एक साथ बात करके फिर सब कुछ करेंगे। मैं बनाता हूँ। टू लेजी टू यस। अरे किसी ने तो भेजा ना मेरे को। कौन था ब्रो? वापस भेजो। अगर यहाँ जान पहचान के रहोगे तो वापस भेजो रिक्वेस्ट। मेरे इसमें से निकल गया। हाँ ओके भाई, एक बार मुझे। अबे किधर है सब? क्या चल रहा है? I just lose 20 twice C2 चीची। I am deleting this game और मैं साथ में रहते हैं 2 मिनट। क्या हो गया इसको? फेम और सारंग 2 मिनट बाहर जाओ प्लीज। क्या हो रहा है ये? और मैं किधर घूम रहा हूँ? हाँ बोलो क्या हो गया? कम हियर। आ रहा हूँ। क्या करूँ? गुरु लूँ? लीव करूँ वर्ल्ड? यस लीव वर्ल्ड। अबे ये तो हकल दिया भाई। ओके बाय गाइस। अरे बाय 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 मैच। मैं ऐसा भी एक सर्वर बनाता हूँ बैठ के, उसमें सिर्फ अपन चिन वाले बातचीत, सिर्फ बातचीत। क्या हो गया? क्या करना है? कुछ देने वाला है क्या? एक्सबिक्स है क्या? डोंट वेस्ट मेमॉक्स, दे आर सुपर लिमिटेड फॉर C2 प्ले। यस द गेम इज काइंड ऑफ अनफेयर विथ कैरेक्टर्स रेटेड बट इट्स बेटर देन मोस्ट ऑफ RPG। यस ये भी है, ठीक है। डोंट वेस्ट एनी प्रेमो ऑन यही मेगा बैनर। ये भी याद रखो। सारंग को किक करो 2 मिनट। ओके एज यू विश। देखते क्या करना चाहता है ये। ओके ओके ऐसा कुछ। क्या क्या करना क्या चाहते हो? अच्छा मेरे को दिखाना है। ओके मैं भी आऊं मारने की? 4,000 की आँख। ये अच्छा था, ये अच्छा था। इसमें कुछ है क्या? नहीं लेने जैसा कुछ नहीं, मैं नहीं ले रहा। देखो नहीं फिश करना। ये अच्छा था। ये अच्छा था मतलब अभी बेनिफिट नहीं था। ओके ओके ये भी याद रखूँगा। ये स्ट्रीम को अभी मैं ऐसा क्लिप करके रख दूँ क्या? क्या क्या चीज़ें बोलिए। हाँ ना, तो अगर मेरे पास ईटो का वेपन होता तो मैं उससे ज़्यादा डैमेज देता। हाँ क्या? हाँ ना, मेरे पास वेपन्स भी नहीं है इतने कुछ। मतलब नहीं है ऐसा नहीं, मतलब है। पर आदित्य को नहीं है, मालूम नहीं। आ जाओ। ओके तो वेपन्स किधर है मेरे? हाँ देखो क्लेमोर, 2 ही क्लेमोर पड़े हैं मेरे पास।
तो ये ही आर्टिफैक्ट नहीं अच्छे अभी। हाँ मैं अभी डेली करूँगा ये जेंशिन इम्पैक्ट मोस्ट लाइकली अभी डेली करूँगा। मेरे आइकॉन पे टैप करके इटो का व्यू करो। चेक इन्फॉर्मेशन इटो। ओ भाई इसके पास तो वेपन भी है। ओ ये टोपी भी है इसके A पास। strong body shows strength and instills confidence in others around you. I must always stay at the top of my game. Shield characters are going to be low worth after equipment release. डेंड्रो, हाँ ये भी सुना है मैंने, डेंड्रो भी सुना है। ये सब सुन के रखा है पर क्या कुछ दिमाग से चले जाते। ओके ओके। ये क्या है? F2P प्लेयर्स को तभी वेपन मिल गया लॉल। मेरे स्टेट्स उससे ज़्यादा अच्छे। रुको तुम्हारे भी देखता। चेक इन्फॉर्मेशन। अभी ईटो ही रखा है पूरी इसमें, चॉनली तो रख देते। ये क्या बे? माँ की आँख एक है। ओ भाई ये तुमने भी टोपी रखी है, पर तुमने भी टोपी और घड़ी रखी है। यस यस मेरे को पता है, ये मैंने इसका देखा था। अभी के लिए तो बहुत है ये गेम, अभी भी मेरे को बहुत कुछ अपग्रेड करना है। क्या बज रहा है ऊपर? मेरे को ईटो का वेपन चाहिए। हाँ ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। लाइक अभी के लिए एक कैरेक्टर के लिए ट्राई करूँगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब ईटो आएगा ना तो जितने भी बाकी मतलब तब तक कलेक्ट हो गए ना, तब मैं ईटो को डाल दूँगा। तो इट विल बी ठीक है, मतलब मिल जाएगा मेरे को, मिल सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं, पर मिल सकता है। That's the thing। और एक मैं और सब चेक ब्रो, आर्टिफैक्ट्स के मेन और सब स्टैट चेक करने को बोल रहा है वो। हाँ ठीक है ठीक है, चलो मैं तो चला। हाँ गाइस मेरा भी हो गया स्ट्रीम। फार्म करना है ईटो के लिए। Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. यार मेरा गेमर तो चल ही नहीं रहा आज। गेम तो चल नहीं रहा है, इस वक्त टाइम आउट ही कर रहा है। अरे हो जाएगा ब्रो। यूट्यूब पे वीडियो देखा भाई, आप सब समझ जाओगे। हाँ ठीक है ठीक है। बहुत कुछ करना है और मेरे को अभी तक मिशंस पहली चीज। मेरे को तो अनेबल टू है, इसको हक लो। क्या हो गया? Best flavor in the world, the sweet, sweet taste of victory. मैं बाहर क्यों नहीं जा पा रहा? अरे डीसी सर्वर में सब हाँ मैं बनाता हूँ। मैं आज शाम को बनाता हूँ, और जब ये सब लोग आएंगे ना तब मैं ऐसा ये कर दूंगा, चैट में सब पिंड करके रख दूंगा, सब जॉइंट हो जाओ। मतलब लाइक ऐसे ही उसमें जितने भी क्वेश्चंस। एग्जिट कैसे करूँ? मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा है। ये देखो, तुमको हक्कल भी नहीं सकता, रिटर्न बैक टू ये भी नहीं। मैंने लीव कर दिया गेम, इसलिए हो रहा। ओके छोड़ो, मैं डायरेक्ट बंद ही कर दूंगा।
अच्छा हो गया, कुछ तो हो गया। हाँ हो गया, मैं रिटर्न आ गया। क्या है ये? क्या है अभी के लिए? सीधा एग्जिट दबाया आपकी, अभी हो गया। ये क्या है बे? अच्छा म्यूजिक है। Don't underestimate the beetle. अरे बस अभी नहीं, अभी याद आ गया तो ज़्यादा नहीं। सो गैंग्स थैंक यू। मुझे अच्छा मुझे आयरन का केव स्टॉर्म केस पहले कर दे। डीसी लिंक कहाँ है? डीसी लिंक मैं ब्रो कल भेजता हूँ, डिस्कॉर्ड के चैट पे पिन करके रख दूंगा, तब सब लोग एक साथ ज्वाइन हो जाओ। अभी मैं बनाता हूँ, एक अलग से बनाता हूँ। अभी ये वाला डीसी कैसा है, इसमें सब ऐसे पर्सनल लोग, ऐसा फ्रेंड्स लोग ऐसे चिल भी ले, अपन उसमें करते। कहाँ रहते हो? महाराष्ट्र में ब्रो, ठाणे में रहता हूँ। ठीक है अभी के लिए इतना ही। कल सुबह में भी मेरे को पेपर है तो थोड़ा लेट होगा, पर मैं आऊँगा, मैं ऑनलाइन आऊँगा, खेलूँगा, मतलब लाइक स्ट्रीम करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सब्सक्राइबर बढ़ गए भाई आज भी। गेम है, गेम में कुछ तो पावर है, अच्छे हेल्पर भी मिल गए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। कल आता हूँ, कल 1 घंटा थोड़ा सा लेट आ सकता हूँ। हाँ चलो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करके रखना प्लीज़, और लाइक भी करना। थैंक यू। NPC से वो नाइस नागपुर, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू टुमारो, कल आना। Show me loving. I need your loving. 'Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving. I need your loving. Me, myself, ain't enough. It's like being a dog to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. You keep it beside along my heart. Oh, are you dreaming of me now?